A very warm afternoon to one and all. We'll now begin with technical session 1, that is on National Professional Standards for Teachers. May now invite chairperson for this session, Professor Chandrabhushan Sharma, to take his place on the dais. Professor Sharma is a professor of education at School of Education, Indira Gandhi National Open University, and Sir has been at forefront in so many committees at national and international level. I welcome you, sir. I also take this opportunity to invite Dr. D.K. Chaturvedi, Under Secretary, NCTE, to please take his seat on the dais. Welcome, sir. National Professional Standards for Teachers has been designed to ensure quality in teacher education and sets out National Education Policy 2020 aim for equitable access to highest quality education for all learners. National Professional Standards for Teacher ensures that all students at all levels of school education are taught by passionate, motivated, highly qualified, professionally trained, and well-equipped teachers. So we have the technical session 1 today, and the presenter for this session is to be done by Professor H.P. Patel. He is a Dean, School of Education, Central University of Gujarat, Gandhinagar. He is again at forefront at many of the committees at national and international level, and to mention one, he is dealing with curriculum at NCERT. Thank you, sir, and I welcome you. We have Dr. Nirav Thakur. He is a principal, AG High School, Ahmedabad, and Dr. Thakur is in the field of education and learning since 31... Thakur. Sorry, I beg your pardon. Dr. Nirav Thakur is in the field of education and learning since 31 years
and has extensive contribution in the field of education. May I invite Dr. Nirav to take his place on the dais. Welcome, sir. I would like to bring to your kind attention that Professor R.C. Patel could not make possible for this session because of throat infection. We have Shri Archit Bhatt as one of the panelists, and he is the Managing Director, Tripura Foundation. He is a man of vision who is constantly striving to bring the change in society through innovation. May I request Sir to please come on the dais. Welcome, sir. Now, before we start with the session, we have one video clipping that is totally based on National Professional Standards for Teachers, and that is prepared by NCTE. So I request the team to play the video. Hello everybody, Namaskar, sabhi ko mera saadar pranam. Today we are here to discuss about National Education Policy 2020, special focus on National Professional Standards for Teachers, which has been mentioned in para 5.20 in National Education Policy 2020. I'm going to share a short presentation and explain what has been the background, what was the why, when, how, and what of National Professional Standards for Teachers for India, and what has been considered. So let me quickly share my screen and share this presentation with you. I hope you can all see my presentation. So National Education Policy 2020 talks about a lot of education reforms, and it specifically focuses on bringing teacher to the center of all education reforms. You know, when I say all education reforms, we mean everything, right from school education to higher education to adult education. Wherever we find a teacher, there have to be educational reforms to help them, support them, to let them grow. National Professional Standards for Teachers document that we are talking about today is specifically focused on school education and what all has been considered behind building. So let me quickly take you through the presentation. So as I mentioned, NP 2020 talks about holistic and quality education for all and has laid particular emphasis on development of teaching profession, putting teachers at the center of education reforms. When we say putting teachers at the center of education reforms, we're talking majorly about three areas. So three core areas. One, education and training of teachers. So not just pre-service education, which leads for somebody to become teachers, but also in-service education, right? If we talk about in-service education specifically, today, in-service education in different parts of the country happens in a very unstructured, very fragmented way, right? So we're talking about a system where all teachers could have a clear pathway, a clear structure, a clear direction of what is the next professional development activity that they have to do and how will it help them in their growth, in their progression. So that's education and training, both pre-service as well as in-service. Next is support in practice. So as the teachers practice, as the teachers go and teach the next generations, build the future of our country, how do we help the teachers and support them in the practice? So NPST is also talking about that. And finally, the career progression, right? When we talk about teachers' career progression in schools today, you know, a normal teacher's career progression looks like somebody starts in nursery or primary school, they become a PRT, then let's say somebody taught there for 5, 7, 10 years, and now when they see growth, they actually have to go and start teaching in middle school. You know, they have to become a TGT, trained graduate teacher, and all their experience and all their desire, their focus, their learnings from whatever they have taught in primary school or nurseries, they have to kind of leave it behind and then move ahead as a middle school teacher to grow in their career. And then similarly, they have to go and become a PGT, teach secondary and senior secondary, and only then they can go to get into leadership positions or administrative positions. We're talking about how to create better, clearer, faster career progression pathways for teachers, that teachers could grow wherever they are. And NEP 2020 specifically focuses on how can we help teachers in growing in the foundational stage. If they are a foundational stage teacher, how do they keep growing in the same stage? If they're a secondary school teacher, how do they keep growing in the secondary stage itself? And they teach
because they love teaching there and they don't move to that particular part of the school because that's the only way of growth. So career progression pathways. So these are the three core areas that NPST document has been focused on. Let's look at what does it mean. So this document has been treated with a simple vision that the entire teacher life cycle, right from when somebody decides to become a teacher and they start taking their initial learning, their initial training to become a teacher, the pre-service education, teacher preparation programs, till the teacher keeps moving ahead, developing skills, keeps getting appraised, gets promotions, and finally is ready to retire at the end of the life cycle. This should be a guiding document. This document has been kept in mind that a teacher should always have guiding principles, guiding document for their entire career, for their entire teaching life cycle. So that's the core, that's the background. I right now mentioned that how do we look at teacher career progression. So instead of moving from tenure-based or seniority-based career progression, that okay, I've been a teacher for 10 years, I need to move to become a TGT or a PGT and only then I can grow. NPST says that every teacher can move up to 4 levels in their competencies. Now, the stages that we're talking about, these are not stages of as designations, these are stages of competencies. So whenever somebody starts teaching, they are at a beginner competency level. So we've defined all the competencies that a beginner teacher should have, worked upon different domains, different subdomains. What all skills should somebody have before they enter their classroom, right? Do you ever want to send your family member, God forbid this ever happens, but let's say somebody requires a surgery. Would you send a family member under the knife to a surgeon who is not experienced and does not have all the skills of becoming a surgeon, right? And that's just the physical body. Now we're talking about human brains. So we have decided, we've defined, we've kind of worked upon, the entire committee worked upon defining what a beginner teacher competency structure should be, and then all those competencies have been defined. Now let's say somebody completed their pre-service education and they got all their beginner teacher competencies. They should be focused on practicing those competencies and then growing using those competencies. So let's say a beginner teacher has multiple competencies, and once they start practicing, their growth is to move to the next competency level, which is a proficient teacher competency. That's the next competency level. So from all the domains that the beginner teacher developed during the pre-service education, they start practicing them and start focusing on each one of them, whether in their in-service education, whether in their mentorship in the school by the senior teachers, by leaders of the school. So the teacher's focus is to move to proficient competency level in every single domain. What are domains? I'll be talking about them right up in the next slide. So then from a beginner teacher to a proficient teacher competency level, next is expert teacher competence, right? So in all the domains that the teacher became a beginner teacher and then a proficient teacher, there is an expert teacher competency, a Kushal Shikshak, right? Pragati Shikshak, Praveen Shikshak, Kushal Shikshak, and finally Pramukh Shikshak. The lead teacher is the 4th level of teacher competence level. Now, I've been talking about these competency levels. All these competencies are stage agnostic. National Education Policy 2020 talks about 4 stages in school, 5 plus 3 plus 3 plus 4. Foundational stage, preparatory stage, middle stage, and secondary stage of school education. Now, let's say a teacher decides of becoming a foundational stage teacher or a middle school teacher, right? This new teacher starts as a beginner teacher in the foundational stage or middle school or secondary school and has shown all the competencies that a beginner teacher needs to have. Now, teacher has all the competencies, gets a beginner teacher status, starts teaching, and starts focusing on becoming a proficient teacher for the same stage of the school. So, becoming now a proficient teacher from beginner teacher for the foundational stage of the school education system. Similarly, you move in becoming an expert teacher of the foundational stage, and then you move ahead and become a lead teacher of the foundational stage. And once you're a lead teacher, you could become, you could move into administrative roles, you could move into leadership roles right from your lead teacher competency level. So that's how the stages have been defined. Now, at every stage, every competency level, there are domains that we have to meet as teachers, competencies in what domains. So the 4 domains have been defined as
core values and ethics, professional knowledge and understanding, professional competence and practice, and professional development and growth. While I'll be talking about all the 4 areas, the very special attention has been given to core values and ethics. As India, as a country, we intend to become, with National Education Policy 2020, we intend to become the knowledge center, the Vishwa Guru in education systems, across the world. Now, Vishwa Guru, becoming that does not just mean we adopt external practices, external systems of education, but build our own core values and ethics and talk about how our core values and ethics define the best education systems, right? We come from a country where our education systems have been used to create foreign education systems. So the first center, the first professional standard has been focused on core values and ethics. We're talking about values and ethics of our Indian society, of diversity, of different ethos that we follow as a society. So that is core values and ethics. Second is professional knowledge and understanding. What is that professional knowledge and understanding that somebody needs to develop as the base knowledge of the teaching profession, right? What is the technical side of teaching profession? Then we move to the third domain, which is professional competence and practice, that what are those professional competencies required to enter the classroom and make sure that every student is getting the best experience of learning. And finally, the professional development and growth, which is a domain very close to my heart, and I think this is something which is really required for teachers to continuously grow. I'll be talking about that as well. So let's go to the first one, which is core values and ethics. As I said, our Indian ethos, our values, our constitutional values, our professional relationships as Indians. How do we maintain them? How do we maintain that national view of patriotism? How do we bring out that core values of how a teacher looks at the entire value system of the country, the ethical system of the country? So we talk about this domain focusing on all those values, right? From constitutional values to professional ethics and values. How do we show commitment to students? How do we show commitment to the teaching profession? And we're talking about it as a teaching profession because that's what the future is. That's what the future targets. That's what the future looks at. But then we're talking about commitment to profession as a Guru Shishya structure, right? How do we bring that guru-based value system into our teaching profession, that we are always committed to infinite growth for our students? So all of those things have been packed into core values and ethics. The next structure is professional knowledge and understanding. We're talking about all that knowledge which defines the teaching profession. Understanding the teaching profession is such an important task that all the teachers and everybody should do. So what are those curriculum structures? What are the factors that really affect student learning? What are these child psychology theories? What are these learning theories? What is the pedagogical knowledge that somebody needs to have before they even become a teacher? How do we become masters of our subject? Right? When we talk about a subject, when we go and try to teach a subject, we should have depth, such depth of the subject that when somebody learns from us, they realize that we do it as a passion, right? So knowledge and understanding of the subject. And finally, how do we integrate technology in education systems? So all of this forms the second domain, which is professional knowledge and understanding. The third domain is professional competence and practice. Here we're talking about those skills which are required to enter the classroom, right? How do we make the classroom experience the best experience for every learner? And today this is valid for both online classrooms as well as offline classrooms, right? Our teachers across the country, across India, have shown in the last 2 years that how efficient we are, how strong we are in our commitment, that against all odds we went ahead and we kept delivering our classes, right? Now is the time we start looking at it as a structure, that how do we call it a professional standard, and how do we build our competencies on learning plans, lesson delivery, assessment structures, classroom communication, and then classroom components and dynamics, which frame the third standard. And finally, the fourth one, I mentioned that this is my personal favorite, and I always try to talk about this, right? So for almost for the last 1.5 decades, for every single teacher education program, for every single class that I have visited, for every teacher that I have met,
I've always asked this question. In fact, every government officer, every bureaucrat, I've always asked this question: who is responsible for teachers' growth? Is it the government? Is it the school? Is it the head of the school? Is it the student? Is it the parent? Is it the teacher itself? And the right answer, there are many right answers, but the right answer is everybody is responsible for it. And everybody has a role to play. So the government can give us policies and budgets and the right structures. Schools can give us the right opportunities, but at the end of the day, there are 10 million teachers in the country, and every teacher should be able to define their own career progression pathway, their own growth and their own development. So if we could train all the teachers on how to identify their own learning needs, if every teacher has the capacity to reflect and practice reflective practices in the classroom as well as outside the classroom for themselves, and then engage and participate in learning communities, and then focus on their own professional development and growth as a whole, while using the opportunities that have been provided by the school heads, by the school, by the governments, by anybody, but teacher being responsible and accountable for the growth, I think all teachers would start growing. So we can't just ask them to start growing on their own. There has to be a competency that has to be developed right from the pre-service education, that a teacher is trained on how to look at their growth. And that has been created as the fourth domain of professional standards for teachers. So these four domains together frame the core of all the competencies that a teacher needs to have, and then develop those competencies for the 4 stages of their career. Let me pick up just any one domain and a subdomain. So let's pick up professional competence in practice, and let's pick up learning plans. So learning plans would have multiple subdomains under that. Let's pick up just one subdomain, which is called learning goals and outcomes. So under learning plans, there are multiple subdomains. So one subdomain is learning goals and outcomes using knowledge of students to support their learning. So a beginner teacher in their pre-service education would learn how to incorporate knowledge of learning taxonomies in creating learning goals and competency-based outcomes. So this is a skill that they will learn in their pre-service education, and only once they have the skill, they would be called a beginner teacher. And not just one skill, right? All the domains, all the subdomains, all the competencies for beginner teacher, only when somebody has them all, they would be called a beginner teacher. Now, somebody becomes a beginner teacher, they've developed all the competencies at the beginner teacher level in the pre-service education. They reach the school, they start teaching, they start practicing those competencies, and they have been trained in the pre-service education itself on identifying the next growth pathway, the next structure of professional development, identifying their own learning needs, and they identify that their next learning need is to become a proficient teacher by developing competencies defined under proficient teacher for all the domains and subdomains. So let's say if this particular teacher had already developed beginner teacher competency on learning plans, on learning goals in pre-service education, the in-service education will be focused on developing proficient teacher competency for this teacher, and they move from incorporating knowledge of learning taxonomies to setting appropriate learning goals and outcomes using curriculum framework for students to support their learning. So this beginner teacher is now focusing on in-service education, the in-service learning that they do, the mentoring and the coaching that they receive from different people in their own school, outside the school, to start achieving competencies at proficient teacher stage, all the competencies. And once somebody reaches the competency level in all the domains, all the subdomains at the proficient teacher level, they move to become the proficient teacher. People might move to proficient teacher in 2 years, in 5 years, completely depends on their own pace. There will be state-specific, country-specific, regional-specific standards on the tenure, what is the minimum time that somebody would take, what is the maximum time that somebody would take, again defined by different state and central government bodies using this NPSC document as a guiding principle. But then these will be the competencies that somebody will be developing as they move ahead. Now imagine somebody becomes a proficient teacher by developing competency on all the standards at the proficient teacher stage. What would be the next step? Yes, start developing competencies at expert teacher level. So for this particular teacher, the next in-service program, if they're attending on, let's say, learning plans, lesson plans, they would say that one of my competencies is learning goals and outcomes using knowledge of students.
And I have to now move to expert teacher competency on learning plans, and then focus on different domains: assessment, values, professional development, for all the different domains and subdomains that you will find in National Professional Standards for Teachers. Now the proficient teacher will start working on competency level of expert teacher and then on lead teacher. So this is how the career progression works. We learn all the competencies which define a beginner teacher in the pre-service education. We become a beginner teacher once we have developed all the competencies which are required at the beginner teacher level. Only once we have all the competencies, we will be called a beginner teacher. We move ahead, we focus on becoming a proficient teacher, we develop those skills, we move to expert teacher, and finally become a lead teacher, and going ahead to administrative leadership positions as and when we desire to move ahead, right? So that's the career progression, and that's how domains and subdomains have been created in the National Professional Standards for Teachers. Thank you. In fact, getting this comprehensive base, may I now request Professor Chandrabhushan Sharma to tell us the modus operandi of the session. Over to you, sir, please. नमस्कार। सबसे पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के यशस्वी कुलपति हर्षद भाई पटेल जी का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस विषय पर एक राष्ट्रव्यापी चर्चा रखी है, और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की मेंबर सेक्रेटरी बहन सिंह शेरपा जी का भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबों को उचित देना मुश्किल होगा, और मुझे कहने को बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, और समय बहुत कम दिया गया था। इनफैक्ट मुझे शुरू में आने का बोलने का था भी नहीं प्रयोजन, लेकिन मैं ये समय चुरा रहा हूं, और या अध्यक्ष होने के नाते ये कर रहा हूं। हम लोगों ने 2 अभिभाषण सुने हैं। मैं सीधा बिजनेस पर आता हूं। परम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी को सुना। मैं आशा करूंगा कि एनसीटी उनके अभिभाषण को बार बार सुने और उसके आधार पर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए। अभी हमने ऋषभ खन्ना जी को भी सुना, आवाज थोड़ी ठीक नहीं थी, इसको भी दोबारा सुनिए। दोनों में विरोध है क्या? किस आधार की बात आचार्य जी कर रहे हैं? हम लोग जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम कर रहे थे तो हमारा भी ध्येय भारत को विश्व गुरु बनाने का था, और उस ख्याल से जो चीजें हम लोगों ने डाली थी शिक्षा नीति में, उसका कार्यान्वयन अब एनसीटी कर रही है। और मैं दूर से देख रहा हूं कि आखिर हो क्या रहा है, हम क्या बनाना चाहते थे, और ज्यादातर लोग जो यहां बैठे हैं, आप क्या चाहते हैं? जैसा आचार्य देवव्रत जी ने कहा, मैं संज्ञान लूंगा 7 अगस्त 2020 को, 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, और 7 अगस्त 2020 को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिक्षकों को संबोधित किए थे। उसको सुनिए। मुझे ये आपका ड्राफ्ट रिपोर्ट है, आप इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के उस अभिभाषण को सुनिए। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? हमने आपको एक शिक्षा नीति दी है, द गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय इट, यू हैव माई विल, इट इज योर पॉलिसी नाउ, टीचर्स यू हैव टू इंप्लीमेंट, एट द सेंटर इज द टीचर। प्रधानमंत्री आके कहते हैं शिक्षकों को, आप करिए, आपको ही करना है। क्या टीचर सेंटर स्टेज होने जा रहा है? थोड़ी परेशानी होती है, मैं शिक्षक हूं तो मैं भीख मांग रहा हूं या गुस्सा दिखा रहा हूं, दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि। हेडगार जी ने कहा था, किसी ने उनसे पूछा कि गुरुजी इस पर क्या विचार होना चाहिए, इस पर क्या सोचें, इस पर क्या मेरा ध्येय होना चाहिए? कहा बस एक ही चीज हमेशा पूछो, ये काम राष्ट्रहित में है कि नहीं। हम जिन स्टैंडर्ड्स को डाले हैं, क्या ये एक राष्ट्रवादी शिक्षक बनाएगा? ऐसे टेस्ट है।
हमने गूगल सर्च किया, परम आदरणीय मोहन भागवत जी ने कई जगह इस पर कहा है, उसको सुनिए, वो आपको डायरेक्शन देगा। परम आदरणीय दत्तात्रेय जी ने भी इस पर कई बार बोला है। वो है क्या हमारे स्टैंडर्ड्स में, उसको देखिए। मैं अपनी बात फिर दोबारा बाद में रखूंगा, एक दो चीजों पर केवल ध्यान डालूंगा। कल भी इस पर एक चर्चा हुई थी वर्धा में, वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय में, वहां भी बात हुई थी। अभी जैसे कोर वैल्यूज की बात क्या ऋषभ जी ने, देखिए पहली बात हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जानना चाहिए टीचर को। कौन सा टीचर होगा जो कि स्कूल और कॉलेज से पढ़ के नहीं आया होगा? उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होंगे कि नहीं हो? क्या हम पूछ सकते थे भारत का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? क्या कोर वैल्यूज में पहला वैल्यू जो है वो भारत का ज्ञान होना चाहिए? मैं क्यों बात कर रहा हूं इसकी? 25 पेज से आप चले जाइए 26 पेज पर, आप कहते हैं डाइवर्सिटी, रिलीजियस, जेंडर, कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक, स्पेशल नीड्स, लैंग्वेज। गूगल करके प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनिए। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है, हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी हैं। माननीय कृष्ण गोपाल जी ने बहुत अच्छा इस पर उद्बोधन दिया है। अरुणाचल के पहाड़ों में चले जाओ, केरल के धरती पर चले जाओ, कश्मीर में जाओ, हम एक हैं, हम हिंदू हैं। पूजा पद्धति अलग है, हम विचार से सब हिंदू हैं। रिलीजन के तौर पर हम बुद्धिस्ट हैं, रिलीजन के तौर पर हम शैवाइट हैं, रिलीजन के तौर पर हम वैष्णवाइट हैं। हम सब जो भारतवर्ष में रहते हैं, हम सब हिंदू हैं। क्या वो हिंदू विचार इस नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में आ रहा है? तो क्या 2030 का जो शिक्षक निकलेगा वो हिंदू विचार का भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक होगा? आपको इस पैरामीटर पर, इस स्केल पर, इस नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा। जब बारी बारी से प्रधानमंत्री कहते हैं ये इंडिया सेंट्रिक नहीं, ये भारत केंद्रित शिक्षा नीति है, तो क्या ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इंडिया सेंट्रिक टीचर तैयार करेगा या भारत केंद्रित? आपने जो बात कही है ये वामपंथ कहता रहा है पिछले 50 सालों से, और यही वामपंथ तो बर्बाद किया है देश को, क्योंकि उसने ही आके कहा कि आप अलग अलग हैं। हर्षद भाई ढोकला खाते हैं, मैं लिट्टी खाता हूं, हम अलग हैं, हम एक नहीं हैं। आप गुजराती हैं, आप बिहारी हैं, आप सब अलग हैं। हमने आपको आकर के एक देश बनाया। मेरा लड़का आईआईटी बॉम्बे प्रोडक्ट, एमआईटी का प्रोडक्ट, और वो भी हमसे कहता है डैडी अंग्रेजों के आने के पहले हम कहां एक थे? He can be considered to be one of the brightest child of the world today. At 27 he owns a mansion right behind London Bridge, if that is the scale of success in this world. और वो हमसे कहता है डैडी क्या बात करते हैं आप, अंग्रेज अगर नहीं आए होते तो हम एक देश नहीं होते। हमने यही पढ़ाया है, हमारे शिक्षक वही पढ़ाए हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने, उसको यह दायित्व दिया गया है और आने वाले समय में एक अच्छा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आएगा। मैं नहीं चाहता था कि जो प्रेजेंटेशंस हों वो यूनिडायरेक्शनल जाए, उसमें एक डाइवर्सिटी आए, एक जोश आए, भारत की सोच आए। इसलिए मैं सोचा कि मैं शुरू में निश्चित तौर पर थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे करके, कि हर्षद भाई ने पता नहीं शायद अब ये ना सोच रहे हो कि गलती से चंद्रभूषण भाई को हमने शेयर करने बुला लिया, लेकिन मेरी सोच यही है कि अगर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर होना है तो वो राष्ट्रवादी भारतीय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। वो कैसे होगा उस पर हम काम करें। और ये तो आपका प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट है, अब जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा इसमें आप निश्चित तौर पर इसका ध्यान रखेंगे और ऐसा ही आएगा। आपकी हम लोग ऐसा फॉर्मेट रखेंगे, हर स्पीकर 10 मिनट बोलेंगे। वैसे चतुर्वेदी जी ने कहा था 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है, वो 20 मिनट का था। हर स्पीकर 10-10 मिनट बोलेंगे और बाद में हम प्रश्न लेंगे आपसे, आपके विचार भी। May I now invite Professor H.P. Patel, sir, to please share his views. And I request the technical support to project his PowerPoint. नमस्कार।
अभी तो हालात ऐसे हो रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर आउट हो जाए धुआंधार बैटिंग करके, फिर हरभजन सिंह को कहे कि आपको स्कोर करना है, तो उस हरभजन सिंह की जो हालत है वो मेरी है। और हमेशा यही होता है, 2-3 प्रोग्राम में मैं सर आपके साथ गया हूँ और हर बार आप मेरे से पहले स्पीच दे देते हो तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती। गुरुजी ऐसा मत करिए। नमस्ते एंड रिस्पेक्टेड ऑल द डिग्निटरीज। टाइम कंस्टेंट हमें दिया गया है। एक वीडियो यहाँ पर प्रेजेंट किया है, उसी लाइन पे हर्षद जी मेरा ही प्रेजेंटेशन था। लेकिन सर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ऑनेस्टली मैं पूछना चाहता हूँ कि वीडियो में समझ आया हो तो हाथ ऊंचा करिए, नहीं आया तो मैं उससे एक्सप्लेन करूँ, सो दैट यू कैन गिव योर व्यू। समझ आया है तो हाथ ऊंचा करिए, नहीं आया तो समझिए मत, डोंट वरी। तो मुझे मेरी डेलिब्रेशन किस तरह से ले जानी हो समझ में आए। तो गुरुजी हाथ तो कोई खड़े नहीं हो रहे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करते कहाँ पर टेक्निकल मेंबर्स कहाँ बैठे मुझे सामने। मौलिक जी स्लाइड ले लीजिए, नेक्स्ट वन। आई एम स्टिल लर्निंग, मुझे भी सीखना है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स क्या होता है। नेक्स्ट वन। तो एनईपी में के अंदर आपने देखा होगा कि फंडामेंटली टीचर एजुकेशन और टीचर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। और शर्मा सर ने भी बात बताई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यू क्या था। तो इसी चरण में आगे बढ़ते हुए, नहीं हो रहा है बेटा, ओके नेक्स्ट वन। Either it is not catching. Next slide. तो more emphasis is given on teacher training. अब हमें ये लगता है कि 2-3 बातें मैं सम अप करके बताऊं तो टाइम भी कम हो जाए। लो क्वालिटी एजुकेशन हो गया हम कहते हैं, स्क्रिप्टेड टीचिंग हो गई है, माइक्रो टीचिंग, इसमें ये लिखना बेटा इतना लिख दो, फाइन, आप उस तरह से क्लास में जाके पोपट की तरफ बोल दो, मैंने इवेल्युएट कर दिया, स्टूडेंट सामने बैठे उन्होंने इवेल्युएट कर दिया, मार्किंग दे दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जिसे कहते स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग हो गई है, तो उसी में से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं बात की है। नेक्स्ट वन। तो फिर इसी में से बाहर आने के लिए हमने टेट, टाट, एच स्टार्ट ऐसे माध्यमों से स्किल टेस्ट करना शुरू किया भारतवर्ष में। मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे आईसीटी आया, तो पुराने टीचर यहाँ पर कुछ बैठे होंगे, उसको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, कीबोर्ड कैसा होता है, उसे रन कैसे करना है, वगैरह वगैरह। सो द रोल ऑफ द टीचर इज चेंज ग्रेजुअली। देन नेक्स्ट। सो टुडे द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फैसिलिटेटर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग देन द गेट कीपर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हम सब लोग क्लासरूम में बताते हैं कि टीचर का रोल आज की तारीख में चेंज हो गया है। फाइन, नेक्स्ट वन। सो पेडागोजी जो है वो भी एक ट्रांसफॉर्म हो गई है कि वी हैव टू बी मोर स्टूडेंट सेंट्रिक, लर्निंग सेंट्रिक। तो वो भी बात आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अब यहां पर एक बात हो रही है कि टीचर को एम्पावर करना है और उसकी जॉब को अच्छी तरह से निभाए, इस पर काम करना है। टीचिंग जॉब में कहा जाता है, कि कहीं पे एडमिशन नहीं मिला मुझे, मेडिकल वगैरह जो ड्रीम हमारे कोर्सेज थे, तो घर बैठे थे तो पापा ने कह दिया कि तुम बीएड कर लो। बीएड करने के बाद एमएड कर लिया, कोई टीचर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया। जो बेस्ट ब्रेन जो है, दे आर नॉट कमिंग इन दिस प्रोफेशन। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। दूसरी बात है कि रिस्पेक्ट भी चला गया। आज गुरुजी ने जो स्पीच में बताया था, देवव्रत जी ने, आपको याद होगा कि एक मान था, सम्मान था, वो भी हमने खो दिया है। गांव में सर गुजराती में कहते कि ये मास्टर आया है। पहले मास्टर का मीनिंग कुछ और था, माँ के स्तर पे जाके जो काम करे, और आज वो टर्म डेरोगेटरी हो गया है। तो उसी में से टीचर को बाहर लाना है। तो यहाँ पर जो एनसीटी मेंबर सदस्य बैठे कि मेरी टर्मिनोलॉजी होगी, टीचर इज द स्कूल टीचर एज वेल एज द टीचर ऑफ द हायर एजुकेशन। नेक्स्ट वन।
और पूरे विश्व में सॉरी इंडिया की बात करें तो 1 मिलियन टीचर की डेफिशिएट है, डिमांड भी ज्यादा है। जैसे सिलिकॉन वैली में इंडियन ब्रेन्स की हाईएस्ट डिमांड है, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट में वी नीड द गुड क्वालिटी टीचर। और फिर से मैंने बताया था कि वी नीड गुड इंटेलेक्चुअल टू बी इन द प्रोफेशन ऑफ द टीचर। तो दैट्स व्हाई द फोकस इज गिवन इन NEP 20। नेक्स्ट वन प्लीज। सो आज की तारीख में होता क्या है कि जॉब नहीं मिल रही है, टीचर्स की जॉब ले लो, और फिर एक ट्राई तो चालू रहता है, मैं GPSC करूं, मैं UPSC करूं, मैं वहां चला जाऊं। सर किसी को यह नहीं लगता कि मैं टीचिंग में ही रहूं। सर्वे किया जाए तो मुझे लगता है 90% केसेस ऐसे रहेंगे किसी प्रोफेशन में रहेंगे, सॉरी दूसरे प्रोफेशन में जाना है। 10% इसी प्रोफेशन में इसी रह लेना चाहते हैं कि मेरा ससुराल इसी टाउन में है, या तो मेरे ब्रदर यहाँ पर रहते हैं, मेरा होम टाउन नियर बाय है, दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू चेंज। So ultimately we can see the majority of the people are coming in this profession. Next slide please. So अब ये समस्या कहाँ पर होती है कि हमारे पास कोई मेंटरशिप नहीं है। तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर ये आप मेंटर बार बार करते रहते हो, वो क्या होता है? तो उसको सिंप्लीफाइड करता हूँ कि मेंटर डजंट मीन बट इट इज दिस फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड जो क्लासरूम में बताते हैं। उनका काम ये ही है कि स्टूडेंट को गाइड करना है, और यहां पर भी मेंटरशिप दी गई है, दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन। नॉलेज शेयरिंग ऑफ द स्किल रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रेसिंग अलोंग विद द करियर लेडर। और NEP 20 में कहा कि टू इंप्रूव टीचर्स वर्क कंडीशन, करियर मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है। तो आपकी वर्क कंडीशन, करियर मैनेजमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे जोर दिया है। कैसे दिया है? नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। नेक्स्ट वन, नीड फॉर स्टैंडर्ड टीचर। इसका सॉल्यूशन क्या है? जो हम एक सिंपल शब्द बोलते हैं कि क्वालिटी टीचर। तो वी नीड द क्वालिटी टीचर, दैट मीन्स वी नीड द स्टैंडर्ड टीचर। और स्टैंडर्ड टीचर कहां से आएंगे? दूसरी लाइन पढ़िए कि स्टैंडर्ड टीचर आएंगे स्टैंडर्ड टीचिंग से। ये मर्गी और अंडे वाली बात है। मर्गी और अंडे वाली बात है कि इफ यू वांट टू चेंज समथिंग देन यू हैव टू स्टार्ट द होल रिसाइकल। नेक्स्ट वन। तो इसीलिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स की बात आई। आगे बढ़ते हैं। अब फोकस क्या है कि प्रिपरेशन। तो पहला स्टेज है कि टू प्रिपेयर द गुड टीचर इज अ प्री कंडीशन। मान लीजिए कि मैं किसी का एग्जांपल ले लूं कि सतीश जी है, वो इज द फ्रेश ग्रेजुएट, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, मेरी स्कूल है, मैंने अपॉइंटमेंट कर दिया और सतीश जी आप आइए, आप पढ़ाइए। सतीश जी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गाइड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड सम प्रिपरेशन। और दूसरा भी एक एग्जांपल दे दूं कि चाहे वर्ल्ड के कितने भी महान प्लेयर क्यों ना हो, चाहे फुटबॉल हो, टेनिस हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, कोई भी हो, आपने देखा होगा कि एवरीडे मॉर्निंग इतने महान होने के बाद भी जोशी सर मॉर्निंग में प्रैक्टिस हमेशा करते हैं। डू यू एग्री सर? और हमारी बात करें सर तो एक बार टीचर हो गए, प्रैक्टिस क्या करनी है, जो है वो पढ़ा देंगे। सो प्रैक्टिस के बाद यू आर एक्वायरिंग योर स्किल। कभी कभी कौशल मैडम ये होता है कि आपके पास स्किल होती है, लेकिन एक स्किल को और हायर लेवल पे भी ले जा सकते हैं। हो सकता है कि 2003 में जब मैंने स्पीच दी होगी और आज मैं स्पीच दे रहा हूं, उसमें कुछ तो अंतर होगा ही। व्हाई? बिकॉज आई प्रैक्टिस लॉट, वेदर इट इज फॉर्मल प्रैक्टिस और इनफॉर्मल। एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अब होता ही है कि जहां पर भी जाते हैं स्पीच दे के आ जाते हैं, जोशी सर आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि सर आप यहां पर हमें बोरिंग कर रहे थे, आपकी ये बात हमें अच्छी लगी, आप इस शब्द का प्रयोग न करते तो अच्छा रहता है। दिस इज द परफॉर्मेंस। सो वी डोंट हैव एनी फीडबैक एंड मेंटरिंग एंड गाइडिंग। So these are the 3 main focus: preparation, practice, performance improvement. Standard and related policies are in the line with the fundamental principle given in the new education policy. Fine, आगे बढ़ते हैं। अब पर्पस क्या है? जो पर्पस तो मैंने कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वालिटी टीचर्स एट द ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड ऑल्सो प्रोफेशनली ट्रेन, वेल इक्विप्ड
वेल सपोर्टेड फॉर ग्रोथ इन देयर कैरियर। अब लगता है कि यहाँ पर प्रोफेशनली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि व्हाट डज मीन प्रोफेशनली, हम एक्सप्लेन करेंगे, पर छोटी सी बात बता दूं। आज ये गैदरिंग था तो मुझे लगा कि मुझे मेरे बाल कटवाने चाहिए, उस पर डाई लगानी चाहिए, आई शुड हैव वन पेन विथ मी, आई शुड हैव द वेल ड्रेसिंग। तो आप कहोगे कि नहीं पटेल सर ठीक लग रहे हैं, और मान लीजिए कि मैं ऐसे ही आ गया होता तो आप कहते कि यार इसकी समझ नहीं, ये प्रोफेसर बन गए, डीन बन गए और चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रोफेशनलिज्म को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं मैं आगे बात करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पर जो पर्पस है टीचर करियर मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग टेन्योर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एफर्ट, सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन एंड अदर रिकग्निशन। ये 6 पॉइंट आप याद रखिएगा। दिस इज द बेसिस ऑफ द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर द टीचर्स। नेक्स्ट। हाँ, अब ये यहां से इंपॉर्टेंस शुरू होता है। आज की तारीख में क्या होता है कि किसी को तलाटी साहब अपॉइंटमेंट हो गई तलाटी सर की, फिर तलाटी सर 1 साल खत्म हुआ सर्विस का, सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, 2 साल हुए सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तलाटी सर ट्रेनिंग ले, प्रोफेशनली डेवलप हो या न हो, स्टूडेंट को गाइड करे या न करे, उनकी सैलरी तो बढ़ती जाने वाली है। बट नाउ ये आपकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर है इट विल बी सीनियरिटी पे आधारित नहीं। आज क्या कहते हैं पटेल आप सीनियर हो तो आप इस पोजीशन में, आप सीनियर तो इस पोजीशन में, देयर वॉन्ट बी एनी सीनियरिटी। तो ये दोनों शब्द आप ध्यान से समझ लीजिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे सीनियर मेंबर तो जानते ही है, लेकिन जो कुछ मेंबर्स है कि नाउ द टेन्योर बेस एंड इवेल्यूएशन होगा। इवेल्यूएशन के बाद ये भी हो सकता है कि मैं 50 साल का हूं और मेरी कॉलेज में एक प्रोफेसर आए हैं 25 साल के हैं, हो सकता है कि ही कैन बी माई हेड बेसिस ऑन दी परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कैसे इवेल्यूएट होगा, पैरामीटर क्या होगा, आगे की स्लाइड में देखते जा रहे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वन। स्टैंडर्ड्स आर यूज ए बेंचमार्क और ए टूल ऑफ मेजरमेंट। अब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि स्टैंडर्ड क्या होता है सर। शर्मा सर आपकी एक परमिशन हो तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि एक बार मैं और सीबी शर्मा सर चतुर्वेदी सर को कहा कि चलो पकोड़े खाते हैं। पकोड़े खाने गए थे, चतुर्वेदी सर ने कहा कि इसमें नमक ज्यादा है। अच्छा था। दूसरी बार गए, फिर कैसे इसमें मिर्च थी, पर फिर भी उससे काफी अच्छा था। तीसरी जगह पर मैं ले गया तो फिर वो कहने लगे कि ये पकोड़े बहुत ही अच्छे थे। अब जब सब हम शब्द का प्रयोग करते बहुत ही अच्छे, तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर। क्या पैरामीटर होगा? उसको अच्छी तरह से पकाया होगा, उसमें इंग्रेडिएंट्स तो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वही मिलाए होंगे, नमक भी मात्रा में होगी, हल्दी भी मात्रा में होगी, मिर्च भी मात्रा में होगी, तब हम कहते ये सही है, क्वालिटेटिव है, अच्छे है। तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड शुड बी देयर। तो स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क होता है कि यू हैव रीच टू अप टू दैट लेवल, और उसी बेंचमार्क के आधार पर आपका इवैल्यूएट होगा एंड आपका प्रमोशन होगा। नेक्स्ट वन। गुड टीचर, गुड टीचिंग, मैं कहा मीटिंग स्टैंडर्ड, प्रोफेशनली एटसेट्रा, टाइम को ध्यान में रखते हैं। पर लास्ट लाइन पढ़ लीजिए कि कुछ स्टैंडर्ड जेनरिक होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक। एक जनरल स्टैंडर्ड होता है कि क्या जनरल स्टैंडर्ड, एक सिंपल कि टीचर दिल से अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वाणी वर्तन अच्छा होना, चाहे वो आप बिगिनर हो, मिडिल लेवल पे हो या सीनियर लेवल पे, दिस इज ए जेनरिक स्टैंडर्ड। और कुछ स्टैंडर्ड प्रोग्राम स्पेसिफिक होते हैं। तो दो प्रोग्राम स्पेसिफिक या तो टेन्योर स्पेसिफिक भी होते हैं। देयर आर 2 स्टैंडर्ड विल बी देयर। नेक्स्ट वन। यहां पर क्वालिटी एश्योरेंस आपको बताया है, तो आप उसको देखिए कि कंपिटेंट, यहां से मुझे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा तो आई विल ओपन माय। कॉन्टेक्स्ट फैक्टर होते हैं, गवर्नेंस फैक्टर होते हैं और प्रोसेस फैक्टर होते हैं। तो तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसको इवेल्यूएट किया जाएगा कि आप को कहां पर पढ़ा रहे हो, किस हालात में पढ़ा रहे हो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि मान लीजिए कि मैं टॉप मोस्ट कॉलेज में पढ़ा रहा हूं एंड वन इज टीचिंग इन रूरल एरिया एंड वेयर द स्टूडेंट्स आर सोशियो इकोनॉमिकली फ्रॉम डिप्राइव्ड क्लासेस, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, process factor, how you are doing and how you are working and what is your system. I will give very small example. एक छोटा सा एग्जाम्पल देते, बहुत वंडरफुल है।
हमारी स्कूल में एक टीचर थे सर, सेमेस्टर होता है 6 महीने का, इंटरेस्टिंग केस है, 4 महीने तक सर उन्होंने एक ही चैप्टर खत्म किया था। फिर हमारे ध्यान में आया, मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? फिर क्या कोई बात नहीं। फिर 15 दिन के बाद आए, बोले कि सर बाकी के 6 चैप्टर खत्म हो गए। अब यहां पर देखा जाए तो टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई है, ध्यान से सुनिए, बट हाउ द एक्चुअल प्रोसेस इज देयर, 3 months 1 chapter, 15 days rest of the 6th chapter, कहानी इज ओवर। So we have to think on the process factor and governance, head, department, HOD, supervisor, coordinator, etc., etc. In this all circumstances, आपकी क्वालिटी को इवेल्युएट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो फ्रेमवर्क में लिखा है कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क कवर्स द की एलिमेंट, यहां पर विजन, गोल, टीचिंग, स्टैंडर्ड डोमेन, जो हम बात कर रहे हैं, कंपिटेंसी लेवल, गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम का जो नया स्ट्रक्चर आने वाला है आप जानते हो, तो उस हिसाब से जो बात हुई है, नेशनल लेवल, प्रिपरेटरी, मिडिल लेवल एंड सेकेंडरी लेवल, जो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ देम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड देन अब NPST will frame the design of pre-service teacher education program। दोनों बात ध्यान रखिए, जो मैं समझ रहा हूं मुझे करेक्ट करेंगे एनसीटी के सदस्य, कि प्री एजुकेशन जो होता है जिसे हम बीएड वगैरह कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसके भी स्टैंडर्ड करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ द रोल ऑफ द टीचर, वो पास आउट होने के बाद व्हेन ही विल गो इन द फील्ड, व्हाट द एक्सपेक्टेशन, एक्सपर्टाइज, कंपिटेंसीज etc. required that will be prepared under the NPST। Next one। Okay, ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि टीचर इन ईच ऑफ द स्कूल लेवल शुड हैव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी विद इन ईच लेवल विदाउट ए नीड टू मूव अनदर लेवल ऑफ कैरियर प्रोग्रेशन। तो यहां पर आपका कैरियर प्रोग्रेशन होता है, जो आज की तारीख में हायर एजुकेशन में कैरियर प्रोग्रेशन है मैडम। हम जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेड लेवल, दिस ग्रेड लेवल, फिर एसोसिएट प्रोफेसर एंड सीनियर प्रोफेसर। तो प्रोग्रेशन आप स्कूल शिक्षा में ये प्रोग्रेशन कहीं पे भी नहीं है। तो कैरियर एडवांसमेंट प्रोग्रेशन कैसे होगा, आई विल इल्यूस्ट्रेट विद 1 or 2 एग्जांपल, बट दिस शुड वी हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब यहां पर आ जाते हैं कुछ जो टीचर के 4 स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे कोर फैक्टर मुझे लगता है कि दिस इज दी, जिसे हम कहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर एंड सीनियर प्रोफेसर। इस तरह से स्कूल शिक्षा में ये स्टेजेस दिए हैं। दैट इज द नोन एज द प्रगति शिक्षक, मींस बिगिनर टीचर। अब बिगिनर टीचर को सिंप्लीफाइड करते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ऑल दी क्वालिफिकेशन, व्हेन यू एंटर इन दी प्रोफेशन, तो उसी टाइम कॉलेज में जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर कहते, इस तरह से हम उसको क्या कहेंगे, बिगिनर टीचर। अब बिगिनर टीचर से आपको मूव करना है, मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आएगी, लेकिन आपका जो अपवर्ड मूवमेंट होगा वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। लिसन वर्ड केयरफुली, दिस विल नॉट बी ऑटोमेटिक। 4 साल जॉब हो गई, अब आप प्रोफिशिएंट टीचर बन गए, ये कहानी गई, समझ लीजिए। हो सकता है कि आप 20 साल तक भी बिगिनर टीचर ही रहो, इट इज पॉसिबल। और एक बंदा ऐसा है कि जो जॉब ज्वाइन करता है 1 साल के अंदर, हो सकता है कि वो प्रोफेशनल टीचर हो जाए, 3रे साल में हो सकता है, पॉसिबल, he can be the expert teacher and he could be the lead teacher. So this is the most striking feature of this NPST, what I understand. So I try to explain in the simple terminology so that you people can give your inputs. Next one. So specific competency standard for teacher to be achieved at each of the career stage in order to progress to the next level. मान लीजिए कि मैंने कहा था, एक एग्जांपल पकोड़े का दिया था, इसमें इतनी मिर्च डालनी, इतना डालना, इतना डाल दिया, वेरी गुड, आपको पकोड़े बनाना आ गया, आप अच्छा पकोड़ा बना दे, कोई बात नहीं, अब ढोकला बनाओ। तो आपका यहाँ पर कुक का एक प्रोग्रेशन होता है, वो भी सीख लिया, फिर आपको कहेंगे कि आप ये बनाइए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इनिशियल स्टेज में हूँ, स्टेज 1 टीचर हूँ, और कुछ कंपिटेंसी जो प्री डिफाइन है यहाँ पर
और ड्राफ्ट में भी है, फाइनल होगी। अगर मैं वो कॉम्पिटेंसी को अचीव करता हूं, देन आई कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। दिस इज व्हाट डज इट मीन। नेक्स्ट वन, तो यहां पर प्रोग्रेशन चार्ट मुझे लगता है कि विजिबल होगा कि एस्पिरेंट, तो पहला जो स्टेज है कि प्री सर्विस, आप जिस कॉलेज में हो वहां पर आप कॉम्पिटेंस एक्वायर्ड करते हो टीचर बनने के लिए। स्टेज 1 ग्रेजुएट टीचर ऑफ न्यूली क्वालिफाइड टीचर, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, वो टीचिंग प्रोफेशन करेंगे, उन्होंने क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड कर ली, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो पॉलिसी बनती है, उसी के बाद जब आप एक्वायर्ड कर दो तभी आप प्रोग्रेशन कर पाओगे। ये जर्नी कि आपने 3 साल खत्म कर दिया सेकंड स्टेज में। एंड कॉम्पिटेंसी मैपिंग, सॉरी प्रोफिशिएंट टीचर नेक्स्ट स्टेज इज एडवांस टीचर, एंड लास्ट वन इज द लीड टीचर, राइट। तो समय को ध्यान में रखते हुए ऑलमोस्ट एंड पे पहुंचा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, स्लाइड पे जाते हैं। अब ये सभी जो टीचर्स के जो स्टेजेस है उसकी बात करते हैं कि प्री सर्विस प्रिपरेशन एंड एजुकेशन, किसी को भी ये प्रोफेशन में आने के लिए बिगिनर टीचर या तो प्रगामी टीचर बनने के लिए आपके पास ये एसेंशियल होना चाहिए क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, फिर आप जब को जॉब मिलती है तब आप बिगिनर बन जाते हैं। ध्यान से सुने, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी रेस्ट ऑफ दी 4 स्टेज आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो पहला बात है कि व्हेन यू एंटर एज ए टीचर, स्कूल आपको हायर करेंगे, एट दिस लेवल यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ यू आर द गुड टीचर। उसके जो पैरामीटर्स है, कॉमन शब्दों में पैरामीटर्स बोलते हैं, राइट। तो पैरामीटर्स को अचीव करना है, आपकी स्कूल में एक मेंटर रहेंगे सर। और मेरा यहाँ पर सबमिशन ये है कि सर मेंटर जो बनेंगे, हो सकता है कि ये प्रोसेस में वी आर ज्वाइनिंग इन बिटवीन, व्हेन वी इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम, तो वहां पर मेंटर कौन होंगे, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंस। सो आई थिंक वी शुड हैव सम ट्रेनिंग फॉर द मेंटर। फिर एक साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं होगी। दिस इज वन माय सबमिशन। मेंटर आपको गाइड करेंगे, क्या कॉम्पिटेंसी लेनी है, आपको ऑब्जर्व भी करेंगे, एंड ही शैल बी कलेक्टिंग एविडेंस। फिर आप स्कूल में जो भी काम करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करेंगे, उसके फीडबैक करेंगे, पेरेंटल फीडबैक होगा, स्टूडेंट फीडबैक होगा, मेंटर फीडबैक हो सकता है, प्रिंसिपल फीडबैक होता है, पीयर रिव्यूड हो सकता है। You are collecting all the document, and mentor shall evaluate each beginner's practice against beginner standard. एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ये टीचर ने कहाँ तक अचीव किया है। फाइन, इफ द टीचर हैज अचीव, देन ही कैन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ध्यान से सुनिए, ही कैन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं मौलिक जी। नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी। हाँ, रीचिंग लेवल 2। अब प्रोफिशिएंट टीचर बनते तो वही चीज आप ध्यान से देखिए कि आप इसी स्टेज पे आ गए हो, आपके पास मेंटर होगा, विल बी सपोर्टेड बाय द स्कूल इन द मेंटर, एंड मेंटर शैल इवैल्यूएट प्रोफिशिएंट टीचर। वो मेंटर तय करेंगे जो पैरामीटर्स मैंने बताए थे। फाइन सर, 2 मिनट सर, ऑलमोस्ट 3 स्टेज खत्म कर दूं, एंड यू विल बी गो इन द नेक्स्ट स्टेज। थर्ड स्टेज प्लीज। थर्ड स्टेज में यहां पर लिखा है कि दिस स्टेज यू हैव टू प्रूव देयर योर परफॉर्मेंस। आपको कोलैबोरेटिवली काम करना कलीग के साथ, और मेंटरिंग टू एनहांस देयर लर्निंग एंड प्रैक्टिस, एंड डेवलप प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन लर्निंग, एंड यू विल अगेन इवेल्युएटेड, एंड अगेन यू विल गो इनटू स्टेज नंबर 4, राइट। अब स्टेज नंबर 4 में लीड टीचर। तो लीड टीचर, यहां पर आपको लीड करना, हाईएस्ट स्टैंडर्ड आपको अचीव करने हैं, यहां पर एक्सेप्शनल कॉम्पिटेंसी आपको प्रूव करनी है। स्कूल मैनेजमेंट और एजुकेशन लीडर शैल इवैल्यूएट लीड टीचर। मैनेजमेंट इवैल्यूएट करेगा, एक्सपर्ट आपको इवैल्यूएट करेंगे, एंड दे विल, दिस वुड बी द लास्ट स्टेज। तो यहां पर मैं मेरी बात को समअप करने जा रहा हूं। तो एक ऑब्जर्वेशन जो है मेरे, कि हमारा जो जंप होगा, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, एनसीटी के मेंबर्स भी यहां पर उपस्थित है, द जंप फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज वर्टिकल एंड एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। Horizontal and vertical means if you are in the secondary section, then I can move accordingly, and I can move to higher secondary section also. It is the so, it's okay, otherwise it is my humble submission. और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जहां जहां बात हुई है, तो अगेन द माय सबमिशन इज दैट कि द
there should be a robust system to be developed for the professional development of the teachers of any stage. किसी भी स्टेज पे है उनके लिए एक रोबस्ट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, यही मेरा सुझाव है. विद दिस वर्ड आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू द IIT टीम एंड NCT टीम. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Professor Patel. With the permission of Chair, may I now invite Dr. Neerav to put his views. Good afternoon. Namaste. આમ તો આપણે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીથી ઘણા બધા પરિચિત છે. એક વર્ષથી ઘણી બધી વાત ચાલી રહી છે અને પ્રોફેસર HB પટેલ સાહેબે બહુ જ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કર્યું. એટલે મને એવું લાગે છે કે મારી પ્રેઝન્ટેશનના બદલે મારા જે એક્સપિરિયન્સીસ છે એ શેર કરું તો મને એવું લાગે છે કે વધારે આઈ કેન એડ વેલ્યુઝ ટુ ધીસ સેશન. ચેરમેન સાહેબ, આપની પરમિશન સાથે શરૂ કરું છું અને પહેલાં તો અભિનંદન પાઠવું છું NCT અને IIT ને હર્ષદભાઈને કે આવું ઇનિશિયેટિવ લીધું કે આ પ્રોફેશનલ સ્ટેન્ડર્ડ ઉપર ઓપનલી ડિસ્કશન થાય, બધા પોતાના વ્યૂઝ સમજે અને આપે. સવારથી સેશન ચાલે છે, એમાં બે એક શબ્દો સતત કાન ઉપર પડી રહ્યા છે કે ભારત વિશ્વગુરુ બનવા જાય. એઝ એ એસ્પિરેશન, ધીસ કુડ બી ધ બેસ્ટ એસ્પિરેશન કે વિશ્વગુરુ આપણે બનવું હોય તો મને એવું લાગે છે કે વિશ્વગુરુ બનવું હોય તો પહેલાં આપણે આખા વિશ્વને, એટલે વી મે હેવ ટુ લર્ન એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એક્રોસ ધ ગ્લોબ. જ્યાં ક્યાં, એટલે પહેલાં એટલે શિક્ષકની શરૂઆત લર્નિંગમાંથી થાય. એટલે વિશ્વગુરુ બનવું હોય તો આપણે પહેલાં બહુ શીખવું પડશે ક્યાં શું ચાલી રહ્યું છે, કયા વિશ્વના કયા છેડામાં કઈ પ્રેક્ટિસીસ ચાલી થઈ, વોટ આર ધ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ એન્ડ હાઉ વી કેન બ્લેન્ડ આપણી જે આપણે વિશ્વગુરુ તરીકે અથવા તો આપણો આવો ભવ્ય સાંસ્કૃતિક વારસો છે, આપણી ગુરુકુલ સિસ્ટમ છે, અને અત્યારે કરંટ જે પ્રેક્ટિસીસ ચાલી રહી છે, જે શ્રેષ્ઠ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ, એ આપણે બ્લેન્ડ કેવી રીતે કરી શકીએ. માત્ર આપણો ભવ્ય ભૂતકાળને ધ્યાનમાં રાખી અને એ દિશામાં જઈએ તો એ બધી પરિસ્થિતિઓ ઘણી બધી બદલાઈ ગઈ. એટલે મને એવું લાગે છે કે આપણે વી મે હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ સમ બ્લેન્ડિંગ of best practices in Gurukul system as well as best practices across the globe. વિશ્વમાં જ્યાં જ્યાં શ્રેષ્ઠ પ્રેક્ટિસીસ ચાલતી હોય એનો અભ્યાસ કરવો જ રહ્યો. બીજી વાત, જ્યારે પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટની વાત આવે છે અથવા તો પ્રોફેશનલ એક સ્તર આપવાની વાત આવે છે શિક્ષકને, વાસ્તવિકતા આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પ્રોફેશનલ જ્યારે એક દરજ્જો આપવો હોય તો દેર હેઝ ટુ સમ બોડી વિચ વિલ રેકગ્નાઇઝ હિમ એઝ અ ટીચર. અત્યારે આપણે શિક્ષકને શિક્ષક તરીકે રેકગ્નાઇઝ નથી કરતા, અથવા તો પાર્ટલી કરીએ છીએ. ક્યાંક એવી સિસ્ટમ ચાલે છે કે જ્યાં સ્ટીલ વી ડોન્ટ રેકગ્નાઇઝ હિમ એઝ અ ટીચર. શિક્ષક ક્યાંક કોઈક પ્રાથમિક શાળામાં ભણાવતો હોય, એને એવું લાગે છે કે એ શિક્ષક છે, પણ ક્યાંય એની ક્યાંય નોંધ પણ નથી અને એનું એ સ્ટેટસ શિક્ષક તરીકેનું પણ સ્ટેટસ, ધો હી ઇઝ વર્કિંગ ઇન ધ સેમ સ્કૂલ એઝ અ ટીચર, પણ એને એ સ્ટેટસ નથી મળેલું. સો આઈ થિંક NCT અથવા તો કોઈ બી પ્રોફેશનલ, હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કે ડૉક્ટર્સની પ્રોફેશનલ બોડી છે તો એને પ્રોફેશનલ બોડીમાં હી ઇઝ અ રેકગ્નાઇઝ બાય દેટ પ્રોફેશનલ બોડી એન્ડ હી ઇઝ અ ગિવન સ્પેસિફિક નંબર કે યુ આર working as a awarded this as a degree and you can work as a profession, this profession, and you have this professional number. તમારો CA નો નંબર હોય, ડૉક્ટરનો નંબર હોય, તો ટીચર્સના જો તમે ખરેખર પ્રોફેશનલ દરજ્જો આપવો હોય તો મને એવું લાગે છે કે we have to start with the recognizing teacher as a teacher by giving him a unique number.
આ મારું નમ્ર સૂચન છે. અને જો ટીચરને આપણે ટીચર તરીકે રેકગ્નાઇઝ કરીશું, એને એમ્પાવર કરવો હોય તો પહેલું સ્ટેજ એ છે કે એને વી હેવ ટુ રેકગ્નાઇઝ હિમ એન્ડ ગીવ હિમ એઝ અ ટીચર, રિસ્પેક્ટ એઝ અ ટીચર. આમ થોડાક એક્સપિરિયન્સ શેર કરું છું હું સીધો જ, કારણ કે પ્રોફેસર HP પટેલે ઘણા બધા વાત કરી છે એટલે હું એમાં રિપીટ નથી કરતો. બિગિનિંગ એટલે પ્રોફિશિયન્ટ ટીચર, એક્સપર્ટ ટીચર, લીડ ટીચર, રોલ ઓફ ટીચર્સ. જસ્ટ મારે વાત કરવી છે, હું થોડાક પોઈન્ટ અપ્રાઇઝરને રિલેટેડ થોડાક ટચ કરું છું, કારણ કે એમાં ડિટેલમાં ઘણું બધું વર્ક કરેલું છે. તો ટીચર્સ અપ્રાઇઝલમાં ઘણી બધા સજેશન્સ છે, પણ આપણે ક્યાંય કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સેલ્ફ અપ્રાઇઝલ આવ્યા પણ અહીંયા ટીચર્સને સેલ્ફ અપ્રાઇઝલ નથી આવતા, અથવા તો ટીચર્સને દેર ઇઝ નો સચ ઇન્ડક્શન ટ્રેનિંગ કે હાઉ યુ વિલ બી અપગ્રેડેડ. તમને અપગ્રેડ કેવી રીતે, જ્યારે જોબમાં જોઈન થાય ત્યારે એને એવું કોઈ સ્પષ્ટ ગાઈડલાઈન નથી હોતી. હું ઇન્ડસ્ટ્રી જોઈન કરું તો પહેલી મારી ઇન્ડક્શન ટ્રેનિંગ થાય એમાં મને એવું જાણવામાં આવે છે કે તમે અત્યારે આ લેવલે ઉપર છો અને તમે આટલી સ્કિલ આટલું ડેવલપ કરશો તો તમારું અપ્રાઇઝલ આ રીતે થશે, અને અપ્રાઇઝલ થશે પછી તમે વર્ટિકલી કેવી રીતે ઉપર જઈ શકો. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ એક્સપ્લેન ઓન ધ વેરી ફર્સ્ટ મંથ ઓફ ધ જોબ. આપણે ત્યાં આવું કોઈ સ્ટ્રક્ચર મારા ધ્યાનમાં નથી, એટલીસ્ટ સ્કૂલ લેવલે તો એવું કોઈ સ્ટ્રક્ચર નથી કે મને ડિટેલમાં એવી એક્સપ્લેનેશન કરવામાં આવે કે ભાઈ હાઉ આઈ કેન પ્રોગ્રેસ ઇન માય બ્રાન્ચ, હું કેવી રીતે આગળ વધી શકું મારી બ્રાન્ચમાં. સો આઈ થિંક એવું કોઈ ટીચર એટલે બિગિનર ટીચર છે તો બિગિનર ટીચરને એવું ડિટેલમાં એવી જ્યારે ટીચિંગ જોબમાં જોઈન કરતો હોય તો એને આવું બહુ જ ડિટેલમાં એની ઇન્ડક્શન ટ્રેનિંગ થવી જોઈએ, એનો પ્રોગ્રેસ એને ખબર પડવી જોઈએ કે હું આ ડિરેક્શનમાં પ્રોગ્રેસ કરું છું. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવું સમજાવવામાં આવે છે કે અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીનું કદાચ હું વાત કરું તો કોઈકને એવું લાગે કે અસ્થાને છે, પણ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ HR ડિપાર્ટમેન્ટ. કે ભાઈ HRમાં એવું બતાવવામાં આવે છે કે હાઉ માય લાઈફ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ગોલ. મારા લાઈફના ગોલ અને ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ છે એ કેવી રીતે મેચ થાય છે. હું પ્રોગ્રેસ કરીશ તો ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રોગ્રેસ થશે, એવું થરલી આઈ એમ ગ્રાઉન્ડેડ ઓન વેરી ફર્સ્ટ મંથ. એવું મને મારા પર્સનલ ગ્રોથ જોડે ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ગ્રોથ જોડાયેલો છે, એ ભાવ જ્યારે જોડાય ત્યારે મને એવું લાગે છે કે ટીચર્સના કમિટમેન્ટ લેવલના ઇસ્યુ જે આપણે ફેસ કરીએ છીએ એ ના આવે. એટલે મને એવું લાગે છે કે એને ક્યાંક કનેક્ટ કરવું જોઈએ આ બે વાતને. જે ટીચર્સના આમ તો ઘણા બધા ડિટેલમાં વર્ક કરેલું છે, થિયરી બધા 4 ટેબલ્સ આપ્યા છે. જે મારી સમજ છે અથવા તો અમે જે પદ્ધતિ થોડીક વિકસાયેલી છે એમાં અમે આટલી વસ્તુને ઇવેલ્યુએટ કરતા હોઈએ છીએ, ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી. આપણે શિક્ષણમાં અત્યારે 4C બહુ જ પોપ્યુલર થયા છે, ક્રિએટિવિટી, ક્રિટિકલ થિંકિંગ. અમે પણ આવા C ડેવલપ કરેલા છે. એમ જસ્ટ શેરિંગ ધોઝ C's એટલે ડોમેન્સ, જેને તમે ડોમેન્સ તરીકે લીધેલા જ છે, પણ આઈ એમ જસ્ટ શેરિંગ વોટ વી આર પ્રેક્ટિસિંગ રાઇટ નાઉ. ફર્સ્ટ છે ક્લેરિટી ઓફ થોટ્સ, કે એને શિક્ષક બનવું છે કે શિક્ષક માટે ટેમ્પરરી આવેલો છે, વેધર હી વોન્ટ ટુ કન્ટિન્યુ એઝ અ ટીચર, એઝ અ ટીચિંગ પ્રોફેશન, કે અત્યારે બીજું કોઈ નથી એટલે અત્યારે એક સ્ટોપ ગેપ પ્રોવિઝન છે કે મારું MRની જોબ હતી કે કંઈક જોબ હતી, હવે અત્યારે કંઈ નથી, ટેમ્પરરી આ જોબ લઈ લીધી છે. સો ધીસ ઇઝ અ ક્લેરિટી ઓફ હિઝ થોટ્સ in a specific profession. This is how we are measuring in our institution. અમારા જે અપ્રાઇઝલ પેરામીટર છે એમાં અમે આટલી વસ્તુ ચેક કરીએ છીએ. વેધર ઇઝ કોમ્પિટન્ટ ટુ ડિલિવર ધ કન્ટેન્ટ, જે કન્ટેન્ટ છે એને ડિલિવરી માટેની એની એ કોમ્પિટન્ટ છે કે નહીં, ધીસ ઇઝ વોટ વી આર ચેકિંગ, કે ભાઈ આ કન્ટેન્ટની ડિલિવરી કેવી રીતે કરી શકે. ઓબ્વિયસલી આ 2 વર્ટિકલ અથવા તો 2 પેરામીટરને અમે હંમેશા પ્રાયોરિટી આપતા હોઈએ છીએ, એક કોમ્પિટન્સી લેવલ અને એક કમિટમેન્ટ લેવલ. વ્યક્તિગત મારો અનુભવ શિક્ષણમાં એવો છે કે કદાચ કોમ્પિટન્ટ થોડોક ઓછો હોય પણ કમિટમેન્ટ લેવલ હાઈ હોય તો એ 5-10 વર્ષે હી એક્સેલ ઇન ધ એજ્યુકેશન ફિલ્ડ. એટલે વી ઓલવેઝ
એમને ખાસ કોમ્પિટન્ટ અને કમિટમેન્ટ એ લેવલે અમે એને ચેક કરતા હોઈએ છીએ. શિક્ષણ એ આમ જો આખું આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશન જોઈએ છે, બહુ બધું ટીમ વર્ક જોઈએ છે. કારણ કે કોઈ અલ્ટિમેટલી આપણા કેન્દ્રમાં તો બાળક છે. આપણે શિક્ષકના પ્રોફેશનલની વાત, સ્ટાન્ડર્ડની વાત કરીએ છીએ, પણ કેન્દ્રમાં તો બાળક જ છે. એટલે કોલાબરેટિવ એપ્રોચ, કારણ કે જો સ્ટાફનું વાતાવરણ ગરમ રહેતું હોય અથવા તો ટીચર્સ વચ્ચે જો કોઈ કોલાબરેશન, બધા કલીગ્સ વચ્ચેના કોલાબરેશન ના હોય, પ્રિન્સિપાલ અને ટીચર વચ્ચેના જો ક્યાંક કોઈ કોલાબરેશન્સ ના હોય, તો એનાથી સંસ્થા સફળ થતી હોય છે અને અલ્ટિમેટલી વિદ્યાર્થી સફળ થતા હોય છે. એટલે આમ અમારે બોર્ડના સાહેબો બેઠા છે, હું કાયમ એવું કહું કે જે સ્કૂલમાં સંચાલક અથવા તો સંસ્થાને શિક્ષક જોડે પેલી ઇન્ક્વાયરીઓ શરૂ થાય એટલે એ સંસ્થા બંધ થાય 5 વર્ષે, 7 વર્ષે, 10 વર્ષે, આવું અમે જોયું છે. એટલે એ કોલાબરેશન જે શિક્ષકોનું, કલીગ્સ વચ્ચેનું, શિક્ષક અને પ્રિન્સિપાલ વચ્ચેનું, મેનેજમેન્ટ વચ્ચેનું, વિચ ઇઝ, અને ઇટ ઇઝ અ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ લીડર કે એ એકદમ કોહેસિવ એન્વાયરમેન્ટ રહે. ઓબ્વિયસલી કોમ્યુનિકેશન, શિક્ષક એ બોલવાનો વ્યવસાય છે, એનું કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ એ ચેક થતી જ હોય છે. એનું એન્થુઝિયાઝમ અને કોમ્યુનિકેશન સ્કિલને પણ અમે એને રેટ કરીએ છીએ. આ તો બહુ જૂની વાત છે. કોકરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝ હોય તો કોકરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝમાં કેટલું પાર્ટિસિપેશન છે. કારણ કે કેટલાક ટીચર્સ એવું હોય છે કે ભાઈ અમારું કામ જઈને, શિક્ષક ખાસ કરીને હાયર સ્ટાન્ડર્ડમાં, કે ભાઈ અમારે માત્ર જઈને ભણાવવાનું, વી આર માસ્ટર ઓફ ધી સબ્જેક્ટ, મારા જેવું મેથ્સ કોઈને ફાવતું નથી, એટલે હું મેથ્સ કરી આવું, પછી મારી ડેટ પૂરી અને હું પછી બેઠો છું. નોટ કે સ્કૂલનું ઓવરઓલ ચાઇલ્ડના ડેવલપમેન્ટ માટે સ્કૂલમાં જેટલી એક્ટિવિટીઝ કરવી પડે, એ તમામ એક્ટિવિટીઝમાં એનું પોતાનું પાર્ટિસિપેશન શિક્ષકનું જોઈએ. એ અમે ચેક કરીએ છીએ કે ભાઈ વેધર ઇઝ એનું પાર્ટિસિપેશન કેવું છે. બીજું ચેક થતું હોય છે કે હાઉ હી ઇઝ અપગ્રેડિંગ હિમસેલ્ફ. એ પોતાની જાતે કંઈક ઇનિશિયેટિવ લઈને કંઈક નવું શીખે છે, કંઈક કરી રહ્યો છે, કોઈક ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યો છે. અને ટ્રેનિંગ, ધીસ ઇઝ અ પ્રાઇવેટ, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, નોટ ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, પણ એમાં અમે એને ક્યાંક સ્પોન્સર પણ કરતા. જો સામે કોઈ ટીચર રિક્વેસ્ટ લઈને આવે કે ભાઈ મને આ ટ્રેનિંગ છે ને મારે જવું છે, તો વી ઓલવેઝ સ્પોન્સર, એટલે એમને 50-50% સ્પોન્સર કરતા હોઈએ છીએ કે આવી ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ છે તો યુ ગો હેડ, અને ઓફિશિયલ એમને રજા આપતા હોઈએ. ઇઝ વિથ ટેકનોલોજી. હવે શિક્ષણ જે દિશામાં જઈ રહ્યું છે ને જે રીતે જઈ રહ્યું છે એ રીતે, અને પછી એમાંય પાછો કોવિડ ટાઈમ આવ્યો, એટલે કોવિડ ટાઈમમાં આપણને ટેકનોલોજીએ તાર્યા કે ભાઈ ટેકનોલોજીને લીધે આપણે કોમ્યુનિકેશન, બસ 2 મિનિટ સર. એટલે ટેકનોલોજી સાથે એનું ઇઝ કેવું છે. સ્ટુડન્ટના પરફોર્મન્સ 2 રીતે અમે મેઝર કરીએ છીએ. એક તો સ્ટુડન્ટની એટેન્ડન્સ, વિચ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને સ્ટુડન્ટનું એસેસમેન્ટ, એને જે ઇવેલ્યુએશન, એનો એકેડેમિક પરફોર્મન્સ હોય તો એ બંને રીતે ઇવેલ્યુએટ કરીએ છીએ. વી ડુ કન્સિડર એટેન્ડન્સ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન વિથ એકેડેમિક એસેસમેન્ટ, એનો સ્કોર શું થાય છે. અને લાસ્ટ આમ કે ભાઈ એનું ડેટા મેનેજમેન્ટ કેવું છે, ડેટા કીપિંગ, ડેટા મેનેજમેન્ટ અને રિપોર્ટિંગ એ કઈ રીતે કરે છે. આટલા પેરામીટર્સ આમ ફંડામેન્ટલી બહુ ડિટેલમાં વર્ક કરેલું છે આપે, પણ ધીસ ઇઝ વોટ વી નીડ. વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ધીઝ આર ધ કોર થિંગ્સ જે પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડમાં થવા જોઈએ. મેજોરિટી આવી જ જતા હશે. જસ્ટ છેલ્લી વાત, મને સિગ્નલ મળી ગયું છે પૂરું કરવાનું. જસ્ટ 2-3 વાત ચેલેન્જીસની કરી અને પૂરી કરું છું. This is a game of mindset. Mindset at every level. Teacher level, principal level, management level, અને ગવર્મેન્ટના જે ઓફિશિયલ્સ છે એમના લેવલે કમ્પ્લીટલી માઇન્ડસેટની ગેમ છે. જ્યાં સુધી જેવો પ્રોગ્રેસિવ માઇન્ડસેટ નહીં હોય અને જે જૂની લઢણ પ્રમાણે બ્યુરોક્રેટિક પેલા ફોર્મમાં જો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જઈશું તો આઈ ડોન્ટ થિંક કે આપણે એને બહુ અસરકારક રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ, અને પછી છેલ્લે કાગળ ઉપરની રમતો બધી થઈ જાય. તો આ એક મને એવું લાગે છે કે માઇન્ડસેટ ઇઝ અ બિગ ચેલેન્જ. ટીચર એજ્યુકેશન, એનો રોલ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે.
આપણે જે શિક્ષકને બહાર મૂકીએ છીએ પ્રગામી એટલે બિગિનર્સ ટીચર્સની વાત કરીએ છીએ તો બિગિનર્સ ટીચર્સની ક્વોલિટી છે એ ક્વોલિટી માટે ટીચર એજ્યુકેશનનો રોલ મહત્વનો છે. બધા પાસ થઈ જાય છે, ડિગ્રી લઈને નીકળે છે, પણ એ ખરેખર એ ડિલિવર કરી શકે એમ છે કે કેમ એની વાત આપણે વિચારવી રહી. ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો કોઈ પણ વાત છે એમાં સ્કેલ આવે, હાઉ સ્કેલ અપ, એટલે કારણ કે વી હેવ ટુ ટોક લેક્સ ઓફ નંબર્સ. એટલે જ્યારે 9.7 મિલિયન ટીચર્સ હોય ઓલરેડી અને એને મેન્ટર્સ પૂરા પાડવાના હોય તો ઇટ્સ અ હ્યુજ ટાસ્ક. એને કેવી રીતે એક્ઝિક્યુટ કરવું ઇટ્સ અ બિગ ચેલેન્જ. પણ આપણે સ્ટુડન્ટને ટ્રેક કરી શક્યા છે યુ ડાયસથી, તો મને એવું લાગે છે કે આ ટાસ્ક પણ આપણે પૂરું કરી શકીએ. પણ વી નીડ અ બિગ ટાસ્ક એન્ડ એટલે બિગ એફર્ટ્સ હેવ ટુ પુટ લોટ ઓફ એફર્ટ્સ ઇન્ટુ ઇટ. ઇવેલ્યુશન ઓફ ટીચર્સ, એમાં જસ્ટ એક થોટ મેં મૂકેલો છે કે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી જે કન્ટિન્યુઅસલી JEE ને એ બધી એક્ઝામ લે છે, આવું કોઈ પ્રોમેટ્રિક સેન્ટર, ઓનલાઈન સેન્ટર હોય કે જેમાં શિક્ષકે કન્ટિન્યુઅસલી પોતાના કન્ટેન્ટને, કારણ કે હાયર સ્ટાન્ડર્ડમાં લોઅર ઓર હાયર સ્ટાન્ડર્ડ કોઈ પણ સ્ટાન્ડર્ડમાં કન્ટેન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એ કન્ટેન્ટમાં અપડેટેડ છે કે નહીં. કેટલીક વાર એવું બને કે 10 વર્ષ 15 વર્ષ શિક્ષણમાં રહ્યા પછી પોતાનો કન્ટેન્ટ છે એમાં કદાચ કોઈ શિક્ષક વીક પડેલા હોય. સો હી હેઝ ટુ ટેક સર્ટિફિકેટ ફ્રોમ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એજન્સી કે જ્યાં એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટલી અને એકદમ સારી રીતે, પેલું CCCની પરીક્ષાઓ ચાલતી હતી અને માત્ર સર્ટીના વ્યવહાર થતા હતા એવું નહીં, પણ એવી કોઈ ઓથેન્ટિક અને ટ્રાન્સપરન્ટ એજન્સી હોય દે વિલ ગીવ એ લોકો એને ઇવેલ્યુએટ કરી અને શિક્ષકને પ્રમાણિત કરે. તો મને એવું લાગે છે કે આવું પણ બહુ અસરકારક થઈ શકે. બીજી બહુ મોટી ચેલેન્જ લાગે છે, મને એવું લાગે છે કે જે મેન્ટર્સ શોધવા ટીચર્સ માટે ઇટ ઇઝ અ બિગ ચેલેન્જ. તમે કોને મેન્ટર્સ તરીકે, કારણ કે એવું કોઈ સ્ટ્રક્ચર અત્યારે અવેલેબલ નથી ને આટલા મોટા સ્કેલ ઉપર મેન્ટર્સ પ્રોવાઈડ કરવા, તો મને લાગે છે ઇટ્સ અ બિગ ચેલેન્જ. મારી વાત પૂરી કરું છું. ક્યાંક કોઈક મારાથી વિવેક બહાર ક્યાંક બોલ્યો તો માફ કરશો. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you so much, sir. With the permission of Chair, I invite Shri Archit, sir, to please put his views. Well, it's a 12th man now coming to score. I'm a 12th man. After hearing everyone, I feel that we are trying to play cricket with a football. I'm sorry, but I mean this. What Nirav sir told is very important, the mindset. The whole triangle is upside down today. Now changing that mindset is very important. We call this National Professional Standards for Teachers. First and very important, do Indian culture allow teaching to be a profession? We need to first answer this question. We say that it's a noble cause. Teacher or teaching is a noble cause. Today we are giving a term is professional. So first, do we have a professional logo like a bar association, like a doctor, like an engineer, or like even your CA? They have a logo. Does teaching profession has a logo? So first, where the paradigm shift need to be, that if we want to go back to the roots, then the word National Professional Standards for Teachers is mismatch. Very important is, I have been into education. I am the second generation in education. I have seen my father working as a educator at an age of 17 in Bhavnagar with Gijubai Badega Vision Schools. So the benefit which I got is that I was nurtured young as a teacher, though I am not a teacher by qualification. I am an engineer by qualification. And when I went to Gujarat University in 95 to take B.Ed form, I was being told there that you are an engineer, you are not a graduate. And I was not allowed to take the form of B.Eds. It's a different story. I did my B.Eds as soon as I came into education.
So very important point is that, are we going to have an age criteria for a person to become a teacher? A 17-year-old, 19-year-old completing PTC cannot become a teacher. It's my personal experience. I run 7 schools. Because a person who does not know about the physical change happening within them at an age of 19 or 20, we expect them to lead a class who is 6-year-old. The age difference is 11 or 12 years. So first, very important, when NCT is here, and I got this opportunity to say, there has to be an age criteria from where that person has to start to be a teacher. In management, as a teacher, the schools or the institutes have a very flat structure. And here we are showing a progression path in 4 different stages, that is your beginner, proficient, expert and lead. Where is that progression path where we in the organization does not have any progression path which is linked to rewards and awards? When it is not linked to rewards and awards, how is it going to be implemented in the schools? Third point, very important. I'll complete it very soon because everyone has been talking on and showing the presentation. But what I'm talking is to the point is, where is it that when someone joins in the, because now the NEP has from age 3, where is it that progression path for someone joining as a beginner should join compulsorily as a preschool? And that has to be a certificate. He is enrolled, registered in a B.Ed or in a teacher training institute, but is not admitted in the building there, is admitted in a nearby school, and their training should happen in the school, not in the B.Ed colleges. So 2 things happen at a time. The deficiency which we have in the schools is justified because at a particular age, for example, we consider 25 years age to be a teacher. So first certificate course, I have been supposed to be doing 2 years of my B.Eds. But first I would be eligible for certificate. So the answer is, I join at a preschool, so I understand what are the issues with a child at age 3. I get a certificate course at the end of 6 months, and the mentoring happens within the premises of the school, not within the 4 walls of the B.Ed college. If that happens, we are hitting, the bullseye. The reason is that 2 things at a time. Teachers are there, B.Ed colleges have registered them, but where the grooming and teaching is happening, where actually they are supposed to be professionally active. Like interns going to the CA. They go to a CA firm as an accountant, right? They do the internship. They give a professional test. Like law, they go to a firm of a lawyer, but they are an intern there. We do not get that benefit of internship in the schools. So what happens? We teach them again certificate. Why are we again going back to the same old understanding? That's where I said that, are we trying to play cricket with the football? And yes, again, somewhere we are trying to have a paradigm shift, but here our thought processes are not to that level. So what I mean to say that beginners can be a certificate course, proficient can be your diploma, expert can be your degree, and the lead one has to complete either MPhil or PhD. So if we are able to relate it like this, and all this has to be within 4 walls of the school. They only come every 3 months or whatever the way designed by NCT is, they come to the institute to report what they've done. So the mentoring happens. So the problem of mentoring is also solved. Very important is, do we have interdisciplinary progression path? What I faced in 95, I had a platform. So in that platform, I was able to get into the B.Eds, right? But there is no interdisciplinary progression path after, because every year I take around 300 to 400 interviews for my schools. Maximum of them have done M.Com B.Ed. Maximum of them. Now, I don't understand M.Com. There has to be some sort of terminology too qualified to be a teacher. How come a M.Com
who is actually certified to be going to a CA or something, has to have the background of languages, because communication, if I go to a class and when I observe the class, I understand that the maximum problem with the teacher is the communication. Language is not a problem. The problem is effective communication. Here we don't understand the difference. Our curriculum is designed with languages. And I am sorry, it should not be designed with languages, it has to be designed with communication. हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, हमने अंग्रेजी भाषा को शिक्षण समझ के रखा है. भाषा शिक्षण नहीं है. मैं बार बार ये चीज मेरे जहाँ पे भी जाता हूँ मैं बता रहा हूँ. हम लोग what have we done is that हमने कहीं ना कहीं we have misunderstood literacy as education. Since 75 years, I think I am thankful to this gathering and this platform where I am able to talk on the level where we have misunderstood the the difference between literacy and education. I was going through the blue book. There is a point called learn, share, connect. Where is the point improvise? There has to be a point improvise. We need to learn, share, connect. And there is no progression path where improvisation of a self is within it. So that has to be put. Understanding the whole situation and yes, the points which has been taken by the esteemed dignitaries here, I would again say, we are talking about core values and ethics, but where are the 16 skills which are needed to become a teacher? A teacher cannot draw. How will the teacher write a blackboard? A teacher cannot sing. How will the teacher make the environment light? A teacher cannot dance. How will the class be joyful? Now that 16 skills has to be involved with the core values and ethics. And if that is done, I think we'll be able to nurture the teachers young. So with this, I hope I'm able to conclude the talk in time. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Sharma sir, if you allow me, I have few questions to put. Yeah, please go ahead. So one of the questions which is bothering... The debate is open to House. We take the questions now based on the presentations. Maybe you can ask a direct question to one of the speakers on their presentation, or general question which, although Chaturvedi ji has said that he has no intentions of speaking, his boss is sitting right in front, and that's bureaucracy, but we are teachers still. He will be able to take questions. So one question which is bothering me is, why are we required to come out with national professional standard for teachers? First, who will be the mentors? How many mentors? What will be the characteristics required to be mentor? Who will appoint the mentor? How will the competency of teachers be assessed? And who will assess the acquisition of required competency to begin with? This many. Yeah, one second. Chaturvedi ji, एक मिनट. आप लेंगे? क्या आप लेंगे? No, 1 second. Just in the capacity of Pariniyamak, I mean that is moderator. So here I would like to add one thing with the people on dais and just with the other participants, means Srota and Bhakta both. This entire document of NPST with the session dedicated, it's focused on the quality, character and competency. It's very simple things. And these are certain things which can't be looked into, rather they can be failed. So we have to go up to that gist, that how quality is to be visualized, that has been translated into the documents. How the character is there, focus, just when you mirror up the NEP document, you'll find the certain things. And these three points are not new. When you go back to the Kothari Commission of 1966, first education policy of 1968, you will there again find the same thing, but within these 5 decades of the duration, whether there is a failure in our system, the policies were already there. So ultimately this policy of 2020 is giving an ample opportunity to think upon us. Really this is a focus, and we have come here just to take the advices that how we will improve this and how we catch up the essence.
So this session should be purely focused to the standards, because another session is purely dedicated after half an hour to the mentors. And that lead part of things, that should not be exactly translated as a mentor. Rather that where a teacher must have the competency just to lead the entire system of the education, particularly in the level where he or she is. So this is simple as a moderator. And now I would like to ask Madam to throw the questions very much to the point to the document, and very much to the point to the speakers, whosoever is there. They have really done a lot of exercises just to reach to the point, and our purpose is quite successful because we are successful to reach to you people to have through this brainstorming session. Thank you very much. Thank you, Mr. Chaturvedi. Do you have any more questions? No. Thank you. The debate is open to House, but I must give a preface to it. It's not a government document. ये सरकार का डॉक्यूमेंट के तौर पर हम नहीं देखें, ये डिस्कशन डॉक्यूमेंट है, इसलिए ओपन है। आप इसकी अगर शिकायत भी करते हैं, क्रिटिक भी करते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सरकार की शिकायत हो रही है। ये डॉक्यूमेंट बनने के बाद सरकार को जाएगा और तब सरकार का डॉक्यूमेंट होगा। आपको याद होगा सुब्रमण्यन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट आया था, हम सब उसके खिलाफ खड़े थे, हर्षद भाई भी बैठे हैं, और हम लोगों ने उसको कैंसिल कराया। दूसरा रिपोर्ट आया और वो भी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन होना था, हर्षद भाई सर हिला रहे हैं, कस्तूरी रंगन, हम लोगों ने फिर उसका सवाल उठाए थे और प्रधानमंत्री जी ने उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया, और तब ये 64 पेज का डॉक्यूमेंट आया है। ये डॉक्यूमेंट सरकार का नहीं है, इसलिए हम लोग खुल के इस पर चर्चा करें, क्योंकि आने वाले समय में शिक्षा कैसा हो इस पर चर्चा होगी। तो ये जो अभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, इसको ऐसा सोच के आप प्रश्न पूछें कि आप 2030 का कैसा भारत देखना चाहते हैं, तो कैसा शिक्षक हो, और इस डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया है। मैं एक दो बातें कहूंगा। मुझे फिनलैंड की सरकार ने बुलाया था, लोग आते हैं देखने के लिए, मुझे बुलाया गया था कि हम लोग कैसे सुधारें। तमाम स्कूलों में गए और बताया गया कि शिक्षक ये करता है, शिक्षक वो करता है, शिक्षा ऐसी ऑटोनोमस है। मेरे मन में प्रश्न आया, मैंने कहा कि और अगर उसको यही था, क्वेश्चन वो सेट करता है, असेसमेंट वो करता है, मार्क्स वो देता है। जो प्रश्न यहां खड़े किए थे आचार्य जी, अश्वत्थामा अपने पिता से पूछता है, द्रोणाचार्य से, कि आप अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, हमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। कोई उत्तर नहीं था। मेरा बेटा भी प्रश्न करता है क्योंकि मैं शिक्षक हूं, मेरा 18 साल का विद्यार्थी भी हमसे प्रश्न करता है क्योंकि मैं बॉस नहीं हूं। और द्रोणाचार्य कहे चलो आज परीक्षा लेते हैं, और उन्होंने चिड़िया रखा और कहा कि ये बताओ क्या दिख रहा है। अर्जुन अकेला था जिसने कहा कि मुझे चिड़िया की केवल आंख दिख रही है। उन्होंने अश्वत्थामा को कहा इसलिए मैं अर्जुन को प्यार करता हूं कि जो असाइनमेंट है वही केवल देखता है अर्जुन, बाकी सब बहुत कुछ देखते हैं। हम पुनः द्रोणाचार्य और अर्जुन कैसे पैदा करेंगे, जिसको कि पूरा अधिकार होगा करिकुलम सेट करने का। और जैसा कि आचार्य जी ने पुनः कहा था, पूरी कहानी तो वो नहीं बताए, जब सत्यकाम जाके गुरु से कहता है मुझे अपना शिष्य एक्सेप्ट करिए, तो शिष्य ने पूछा तुम ब्राह्मण हो क्या? उसने कहा पता नहीं, मेरी माँ ने कभी बताया नहीं। कहा जा पूछ के आओ। माँ के पास गया, माँ ने कहा देखो मैं सेविका हूं, मैं बहुतों की सेवा की हूं, मुझे पता है तुम्हारे पिता कौन है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम जाके बोलो गुरु को कि तुम जावाला सत्यकाम हो, जावाल के पुत्र हो। और वही जाके कहा ये जो ऑनेस्टी है एक ब्राह्मण में हो सकता है, ब्राह्मण कुल कास्ट नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि ऐसा शिक्षक हो जो स्वयं करिकुलम सेट करे, स्वयं असेसमेंट का प्रोसेस तय करे और स्वयं मार्क्स दे, तो वो कैसा होगा। क्योंकि फिनलैंड में जब हमने पूछा कि वॉट एवर यू आर सेइंग इफ द टीचर डजंट डू, देन बिकॉज आई नो वी हैव massive teacher absenteeism in India, how to cure that? And that I asked this question, if the teacher doesn't do that, every time I went to many schools and every time I asked this question and every time they raised their eyes and said, but why will the teacher not do that? He or she is a teacher. क्या हम ये प्रश्न 2030 में कहेंगे टीचर है भैया वो, उसके बारे में शंका क्यों कर रहे हो? वो टीचर
है कि आज गुरु है। ये डिबेट ओपन है हाउस के लिए, आप अपने प्रश्न पूछिए जी। सर मेरे दो तीन क्वेश्चन है। एक तो है जो टीचर का ग्रोथ है, कैरियर ग्रोथ, उसमें प्रगामी शिक्षक से प्रमुख शिक्षक तक का जो ग्रोथ है उसमें उसका एवोल्यूशन जो है वो उसका प्रोफाइल है हर एक स्टेज में। दूसरा मेंटर रिपोर्ट है और तीसरा फीडबैक सिस्टम है। सो उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट कितना होगा और सब्जेक्टिव कितना होगा, क्योंकि जब भी ये अप्रेजल में जाएगा और अगर ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ ही जाना है उसका कैरियर ग्रोथ, तो देयर विल बी मैनी प्रॉब्लम। तो वो कितना ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा जिसको स्कोर किया जा सके और कितना ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। दूसरा हर एक स्टेज में फाउंडेशन हो या प्रिपरेटरी हो या फिर मिडिल स्कूल हो या फिर हायर एजुकेशन, सभी में अगर कोई प्रगामी शिक्षक है तो उसका स्केल सेम रहेगा या फिर जैसे हायर एजुकेशन में जाएगा उसका स्केल भी डिफरेंट होगा। तो प्रगामी शिक्षक अगर प्रमुख शिक्षक है या प्रवीण शिक्षक या कुशल शिक्षक है तो सबका स्केल सेम होगा क्या? वरना अगर वो नहीं होगा तो फिर वो कैरियर एडवांसमेंट के लिए एक स्टेज छोड़ के दूसरे अलग स्टेज में बार बार जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है। ये दो प्रश्नों का उत्तर पहले करा लेते हैं, फिर और लोग भी होंगे, लेकिन मैं एक बात पहले फिर दोबारा दोहराऊंगा। 7 अगस्त 2020 के प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनिए। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा, सबसे आवश्यक है फाउंडेशन का टीचर, वो सबसे मजबूत होना चाहिए क्योंकि वही नींव डालता है शिक्षा की। तो उन्होंने भी कहा था फाउंडेशन का टीचर अपने ही लेवल में ऊपर जाएगा 3 साल 6 साल 8 साल 5 साल पढ़ा के, वो शिफ्ट नहीं करेगा मिडिल या सेकेंडरी में, तीनों से अलग अलग होंगे। टीचर तय करेगा कि हम फाउंडेशन का टीचर बनना चाहते हैं, उसी में ट्रेनिंग होगी, उसी में पढ़ाएगा, उसी में वो नीचे से ऊपर तक जाएगा। इस डॉक्यूमेंट की क्या समझ है ये एनसीटी बताएगी आने वाले समय में, और जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। Yeah, the same what sir has explained. This is the same what is the message of this document. Within the same rank and file of a teacher, where he is appointed, he is to acquire the various 4 competency, as one of our speaker told, that the vertical and horizontal. So you will see that if Mr. X is a beginner teacher, of a foundational level or elementary level or secondary level, he should acquire all 4 level of the competency within the same rank and file. This is exactly what has been described, and Professor Sharma has very much right that the same essence is matching together. जी सर, जहाँ पर मेंटरिंग की बात आती वहाँ पर एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि परफॉर्मेंस इवेल्यूशन होता है। हम भी क्लासरूम में आज की तारीख में परफॉर्मेंस इवेल्यूट करते हैं व्हेन द स्टूडेंट्स आर गिविंग द डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर, माइक्रो टीचिंग, इंस्टॉलेशन, व्हाटएवर। तो वहाँ पर जो इवेल्यूशन करते हैं वो सब्जेक्टिव इवेल्यूशन ही होता है। पर व्हेन वी आर गिविंग द सब्जेक्टिव इवेल्यूशन तो वी शुड बी ट्रांसपेरेंट। पहली तो कंडीशन है कि हमें ट्रांसपेरेंट बनना है, ऑनेस्ट बनना है। मेरी स्पीच में भी मैंने ये कहा था कि वी हैव टू, क्योंकि अदरवाइज पेपर पेंसिल में एपीआई, जो हायर एजुकेशन के लोग एपीआई जैसा मामला हो जाएगा। 10 पेपर सबमिट कर दिए, ये सबमिट कर दिया, ये सबमिट कर दिया, कहानी खत्म होगी। There should be the evaluation mechanism from the mentor, from the other stakeholders, but the precondition of all this, इसको सक्सेस करने के लिए एक ही precondition होती है, what I understand, we means that mentor or whoever the evaluator is, जो evaluator है उनको ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट बनने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप कहीं पे भी सिस्टम लाइए कि जहाँ पर सब्जेक्टिविटी होती है वहाँ पर आपकी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी मैटर करती है। And that's why we need the good mentor. It should be sir 90 or 5 plus 5 may be there. Objective evaluation may be 95. आपका मैसेज एनसीटी को जी मैम। So thank you, because you know your question is very valid. In fact, let me just tell you that this part, that implementation as to you know how it will be, how we are going to do this assessment part, whether it's going to be objective, subjective. We are actually very shortly going to come out with, it is not there in the document, therefore this confusion is there, I understand that. So we are now working on a part called the implementation strategy, where we will be coming out with
how do we assess the competencies? If we are saying from a beginner you have to shift to the next level, what are the assessments required? What are the evaluation methods that would be required for you to, sort of qualify to move to the next level? This is something which we are working on, and let me tell you that I think on the 4th and the 5th, we are having a round of discussions with brainstorming with teachers, school teachers, because this affects school teachers largely. So school teachers from all across the country. And we will be specifically concentrating on these descriptors and what you are saying, the confusion that is there. I understand you're not the first person who raised this. There is a question as to whether this NPST should be linked to your career progression, because that is what the document also talks about, the NEP. So these issues are being looked at, and I think when the final document comes out sometime in the end of January, you will find that your questions are answered. Our objective would be to keep the assessment largely objective, because we don't want subjectivity to come in, because as you're saying, the entire country is so diverse. Gujarat may be very high up on your education, your education parameters. Some other state may not be. So this is being looked at, and I think when the document comes out, you will get your answers. I also request you, since you have raised this very, very valid question, to please send your viewpoints on what you would like included in the document, so that we can, when we are having these discussions, this will be taken up. Thank you. आप अपना जवाब जरूर एनसीटी को मेल से भेजिए, मेल आईडी दिया गया है, तो जी तो सजेशन भी कह सकते हैं। एक मुद्दा ये है कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है 41 पेज में जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो टेबल है, उसको जो मैं पढ़ रहा था और प्रेजेंटेशन में भी देख रहा था, ये सेल्फ अप्राइजल वाली बात जो है वो कहीं उसमें ऐड होनी चाहिए, या शायद होगा तो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन और स्पेशली एट द लीड टीचर, क्योंकि लीड टीचर के बारे में उसको गाइडेंस देना लिखा है, लेकिन उनको भी अपना सेल्फ अप्राइजल करें, तो वो एक मुद्दा मुझे कहीं ना कहीं देख रहा है। दूसरी बात है कि क्योंकि इतने टीचर्स, इतने लोगों का अप्राइजल की जब बात करें तो एक लोड बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि ईयरली उसको ब्रेक करना चाहिए। एज ए पॉलिसी जब बनती है तब एक सेल्फ अप्राइजल एक साल में, दूसरे साल में पीयर अप्राइजल और तीसरे साल में एक्सटर्नल अप्राइजल। अगर हम 3 स्टेज में बांट दें तो लोड कम होगा, क्योंकि अदरवाइज सिस्टम पर लोड इतना बढ़ेगा कि सिस्टम खुद फेल हो जाए। तो ये इस तरह से अगर हम स्ट्रेटेजिकली जाएं, तो दूसरा मुद्दा मेरा उसमें एक कहने का था। और तीसरी बात जो सर ने जो कही, उसके साथ साथ कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो एक इंसेंटिव है कि भाई किसी भी टीचर को आज प्रमुख टीचर तक पहुंचाना है मुझे, लेकिन साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए, नॉट ओनली द फाइनेंशियल थिंग्स। जैसे कि मैं हूं तो मैं कम से कम 2 लोगों का मेंटर करूं तो जाके मैं प्रगति से आगे बढ़ सकता हूं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से 2 फायदे हो सकते हैं। एक है कि व्यक्ति को खुद को लगता है कि ये मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है क्योंकि मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। दूसरी है सिस्टम को फायदा हो रहा है क्योंकि सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रही है। तो मुझे लगता है दोनों जगह फायदा होता है। तो ये नॉट ओनली द फाइनेंशियल टर्म बट एट द सेम टाइम अदरवाइज जो टीचर है वो जन्मता भी टीचर है, मरता भी टीचर है, उसकी सैलरी बढ़ती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती। तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। 2 मुद्दे मेरे सजेशन है। बहुत सुंदर सुझाव है, जरूर हमको लगता है एनसीटी सुन रही है, उस पर और संज्ञान लेगी। उसी अप्राइजल के बारे में ही मैंने पूरा डॉक्यूमेंट जल्दी से पढ़ा, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कि अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस पे फोकस करें, एक टीचर का प्रोसेस होता है बच्चों के साथ, हम बात कर रहे हैं, मैंने जो एग्जाम्पल दिए गए वो भी पढ़ लिया। एक जगह पे सिर्फ लिखा है 360 डिग्री इवेल्यूशन एंड प्रोफेशनल अप्राइजल। वो 360 में क्या हम बच्चों को कैसा लग रहा है, वो टीचर जब वो ज्वाइन करता है उनका स्टेज बढ़ रहा है, हम बढ़ाते हैं वो उसको डॉक्यूमेंट की तरफ, मेंटर के क्या फीडबैक हैं और लोगों के क्या फीडबैक है, उसने पढ़ाया कैसा, वो सारी बातें हम मांग रहे हैं। क्या हम बच्चों का कुछ जोड़ रहे हैं, इस टीचर के साथ प्रोसेस क्या हो, उसमें आपको उनका कोई हिस्सा होगा कि नहीं होगा। चलिए, अगर ये अच्छा, डॉक्यूमेंट नहीं आपका सुझाव निश्चित तौर पर एनसीटी सुनेगी, लेकिन सर ये जो 360 डिग्री जो अप्रेजल की बात चली है, वो टीवी राव जी करके आईआईएम के एक्स प्रोफेसर थे और उन्होंने पूरा उस पर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर ये 360 डिग्री का जो अप्रेजल सिस्टम है सालों से चलता है। हमारे स्कूल्स में हमने ये चीज़ 360 डिग्री किया। तो जैसे आप, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारे लोग यहाँ बैठे हैं और ये जो बात चल रही है, अप्रेजल्स की बात चल रही है, रिवॉर्ड्स की बात चल रही है, अवार्ड्स की बात चलती है, तो 360 डिग्री जो अप्रेजल है मेजरली फोकसेस
on appraisal done by the higher ups, lower people and the subordinates, यानी peer, जिसकी mentoring के इस book के blue book के अंदर mentoring की जो बात हुई है, I think somewhere the abstract has been taken from this TVL appraisal, 360-degree appraisal, which I think where ma'am said that जैसे process driven process में आएंगे, I think this 360-degree appraisals will be based on the mentoring and based on the जो mentor जिसने किया होगा उसका जो feedback होगा उसको link करके 360-degree appraisals will be more effective to decide on the rewards and the awards. Thank you very much. We don't have much time. बहन जी, सर पहली महिला हाथ उठाई हैं और हम लोग उन्हीं को पीछे छोड़ देते हैं. आप सबसे पहले जी. Sir, you said that the stages are there, right? There are many women workers in the teaching field. Due to many reasons, they leave the job in between. How do they get from one stage to another stage in that process? Maybe because of marriage they leave the job, or because of family they leave the job. Then how do they उनका अप्रेजल किस हिसाब से आप सोच रहे हैं फिर उसके लिए? देखिए, मैं इस डॉक्यूमेंट में क्या है उस पर तो उसको डिफेंड नहीं करूंगा. मैं केवल ये कहूंगा क्योंकि आई एम वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द एनईपी. 2-3 चीजें पढ़िए. हम लोगों ने देश भर में घूम के लोगों से बात किया था, लड़कियों से बात किया था. लड़कियों ने कहा था कि हम लोग जॉब इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, मेरे बच्चे का स्कूलिंग है. ठीक है, इस पॉलिसी में हम लोगों ने 2-3 चीजें डाली हैं, ध्यान से पढ़िएगा. फर्स्ट, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लो. सब देश भर में 62 स्कूल बोर्ड हैं. इनवैल्यूएबली सारे स्कूल बोर्ड में गर्ल्स बॉयज को आउट परफॉर्म करती हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में कहां चली जाती हैं वो, क्योंकि हायर एजुकेशन सस्टेन नहीं करता है उनको. हम लोगों ने क्या कहा, नेशनल एप्टीट्यूड लो, टेस्ट लो, लड़कियां बेटर करेंगी. 4 साल का बीएड कराओ. और पुणे में लड़कियों ने कहा था हम लोगों को कि अगर ये हुआ तो हमको पेरेंट्स पढ़ाएंगे नहीं. हम लोगों ने रिकमेंडेशन में लिखा है इनको स्कॉलरशिप दो टू परसू 4-year बीएड. जितने भी लोग सेलेक्ट हो, 4 साल बाद जितने टीचर चाहिए उतना इस साल सेलेक्ट करेंगे और सबों को स्कॉलरशिप देंगे. इफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज से द फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज नर्चर्ड इन द स्कूल्स, व्हाई नॉट नर्चर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स? एंड स्पेशली गांधी had said in 1937 and we reiterate in this policy, nurture them, give them priority. और फिर क्या कहा, इनको हाउसिंग दो, इनको हाउसिंग दो. और एक लाइन जो बिल्कुल मेरा कंट्रीब्यूशन इस पॉलिसी को, अगर हाउसिंग नहीं देते हो एनहांस्ड एचआरए दो. आई हैव सीन दिस अक्रॉस द वर्ल्ड. तो एनहांस्ड एचआरए दो. तो बिल्कुल ये पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारी बहनें भी ऊपर आए, ये पॉलिसी बहनों के लिए है और उन्हीं के लिए, खास करके टीचर एजुकेशन वाला सेक्टर. सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड जो फाइनल आएगा वो निश्चित तौर पर प्रो वुमेन होगा. सर, लाइन का ही क्वेश्चन है कि ये ऑटोनॉमी की बहुत ही बात चली है और ये इसमें 4 स्टेजेस डोमेन वगैरह जो दिखाए गए हैं, इट्स फाइन, नाइस, बट हाउ ऑटोनॉमी ऑफ अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस will be provided. If it is provided not only on paper, because ये बातें तो ऑटोनॉमी की बहुत सालों से हो रही है, पर रियली इन ट्रू सेंस हमें देखने को बहुत ही कम मिली है. तो ये कैसे, इसका प्रावधान कैसे होगा, तभी ये 4 स्टेजेस हो सकेगा. और दूसरी बात ये है कि ऐसी स्कूल जो इंटर्नशिप वगैरह की बात हुई, तो इंटर्नशिप जैसे एक अकाउंटेंट के वहां जाता है या दूसरी कोई फील्ड में है, तो ऐसी कोई स्कूल्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहां पर वो इंटर्नशिप करे तो वहां से प्रोडक्ट अच्छी ही निकलेगी. वरना जरा थोड़ा मुझे वो शेकी लगता है कि हर जगह इंटर्नशिप करवा के वो इवेल्युएट करना थोड़ा बहुत क्वेश्चनेबल है. बहुत बहुत आभार आपके प्रश्न के लिए. एनसीटी सुन रही है, इसको निश्चित तौर पर फाइनल डॉक्यूमेंट में रहेगी. थैंक यू सर, बट ओनली फॉर 1 second, दिस ऑटोनॉमी की जब बात कही है, दैट एनसीटी विद द एक्सपर्ट टीम इज थिंकिंग अबाउट ऑटोनॉमी, बट नॉट अलोन अबाउट द ऑटोनॉमी, रादर विद द अकाउंटेबिलिटी टू द टीचर्स. एंड एनसीटी इज वेरी मच प्रॉम्प्ट ऑन दैट थिंग, एंड दैट विल बी सीन व्हेन मैडम हैज assured will be that application based or implementation stage will be made clear.
But that would be altogether accountability, autonomy with accountability to a teacher. That is there. I have one more thing. I have one more thing because Archit ji also raised this, this point, and sir, you have also raised regarding the whether, because you're saying that those who are training to become teachers, they should have the internship, like doctors go to the field. So when we come out with our 4-year ITEP, which will be out very soon, you will see that we have a 6-month internship program. And because NEP talks about experiential learning, going out to the field and not only sitting in the classroom and understanding. So we have taken care of that. The internship is about 6 months. There will be schools, wherever. If a student has opted for the preparatory stage, depending on which stage he has opted out in, they will be going to the respective schools and interning there. So we have kept enough provisions as per the NEP in that. Thank you very much, ma'am. Thank you. I have time enough for that because you have only half an hour lunch break. The next session starts at 2:15. Sir, I have just last question. Sir, sorry. I am the person, sir, who raised the first hand. Oh नहीं, दिख नहीं पाया, sorry. मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए. ओके सर. सर मैं यहाँ पे 2-3 बात कहना चाहूँगा. पहला, पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी वर्क एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई है, जबकि फाउंडेशन स्टेज से लेकर के मिडिल स्टेज तक जाते जाते प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और राष्ट्र की पहली ज़रूरत ये है कि बेरोजगारी को दूर किया जाए और हर हाथ काम करता हुआ बने, उसके बारे में बात की जाए, उसके बारे में हर शिक्षक सोचे और अपना कंट्रीब्यूशन दे सके. तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया बनना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म के साथ इसको जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वर्क एजुकेशन जब तक शिक्षक खुद नहीं करेगा वो टेंडेंसी बच्चे में नहीं आएगी. इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ तक सुझाव देना चाहूँगा कि मिडिल स्टेज तक जो भी शिक्षक अपॉइंट होता है उसके पास कोई ना कोई एक सोशली यूजफुल वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्किल होना चाहिए, जिसकी बात 1937 में गांधी जी ने भी कही थी और उस चीज़ को हम लोग बार बार भुला रहे हैं. और ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो थ्योरेटिकल मुझे लगता है, क्योंकि इसमें बिहेवियरल पार्ट जो है बहुत ही कम दिखलाई पड़ता है मुझे, क्योंकि अभी तक हम उसी पेडागोजी में चल रहे हैं जो कि 1948 में बनाया था हमने. तो इस वर्क एजुकेशन को इसमें शामिल किया जाए. दूसरी बात रही प्रोफेशनलिज्म की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक कार्य, हर एक प्रोफेशन नोबेल होता है. कोई नोबेल कॉज होता है और कोई डुअल नोबेल कॉज होता है, ऐसा नहीं. हर एक प्रोफेशन का अपना एक नोबेल होता है, उसका पैरामीटर होता है, उसकी वैल्यूज होती है. तो ये होना चाहिए. और रही बात ब्रेन ड्रेन की, तो उसको सुधारने के लिए अगर वाकई हमारे में साहस है और हम कह सकते हैं, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी और इवेल्युएशन, इन तीनों पे फोकस करना पड़ेगा. सिक्योरिटी वहां से होनी चाहिए कि जिस दिन बच्चा प्रोफेशन में सेलेक्ट होता है, उसमें आने की सोचता है, तो उस दिन उसे पता होना चाहिए कि ये कोर्स करने के बाद मेरी जॉब की भी सिक्योरिटी है. इसका उदाहरण मैं देख सकता हूं सर. आज से कुछ साल पहले तक पीटीसी किए हुए बच्चे को उसकी नौकरी जो है वो पक्की होती थी, तो उसमें हाईली इंटेलेक्चुअल जो बच्चे होते थे वो आते थे. और हम ये मान के चलें कि इंटेलिजेंस जो है वो नहीं बढ़ाया जा सकता एक लेवल के बाद, उसको सेलेक्ट ही किया जा सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को हम प्रशिक्षण के द्वारा, वातावरण के द्वारा बढ़ा सकते हैं. तो पहले लेवल पे हम इंटेलेक्चुअल को लाएं. इसके लिए जरूरी है कि हम उसके जॉब की सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर दें. हम पूरा हायर एजुकेशन तक न कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन मिडिल स्टेज तक ये होना ही चाहिए और राष्ट्र की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके जॉब की सिक्योरिटी हो. जिस दिन वो उसमें आए एक स्क्रीनिंग के बाद या एनईटी के टेस्ट के बाद, तो उस दिन से उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरी ये जवाबदारी है, मेरे ऊपर इतना खर्च हो रहा है, मेरी ये जॉब सिक्योर है, तो मुझे ये करना है. तो शायद हम ब्रेन ड्रेन से बच जाएंगे, अच्छे ब्रेन हमारे पास आएंगे, वही आएंगे जो पढ़ाना चाहते हैं. और ऐसा हमने भविष्य में देखा हुआ है कि वही लोग आए हैं जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल थे और फिर हमने वातावरण दिया, इमोशनली वे डेवलप हुए, स्पिरिचुअली डेवलप हुए और एक बढ़िया टीचर बने. सर थैंक यू सर. बहुत बहुत आभार. हम समय से 2 मिनट आगे निकल चुके हैं. मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखूंगा. रामायण ये कहता है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोले ही प्रिय भयास, राज धर्म तन तीर कर हो यही वेग ही नाश. तो जब आप शिक्षकों को बुला लेंगे तो आपको थोड़ा कठिन सुनने का धैर्य रखना पड़ेगा. और दूसरी जो मैं बात कहूँगा खास करके एनसीटी के लिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए. निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए,
बिन साबुन पानी बिना निर्मल देत बनाए। तो इसको आज की इस चर्चा को इसी लाइट में देखना चाहिए कि ये आपकी शिकायत नहीं है, आपको सलाह है। मैं एक सलाह अंत में देकर के खत्म करूंगा। एक बड़ी अच्छी किताब है फ्रीकोनॉमिक्स, उसका पहला चैप्टर है द स्कूल टीचर्स एंड द सुमो रेसलर्स। अमेरिका ने बहुत पहले शिक्षकों का नकाब कसने का प्रयास किया था, उसका क्या प्रभाव हुआ ये फ्रीकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में पढ़िए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल टीचर्स, गिव देम ऑटोनॉमी। I am slightly apprehensive about accountability. As soon as you say accountable, we know how to manipulate accountability. We are teachers, we have manipulated you. You are here because of us. हमने जैसा आपको पढ़ाया, जैसा तैयार किया था, तब साहब आए हैं आप। हमने बच्चों के पीठ पर हाथ रखा है, बेटा तुमको यहाँ जाना है और वहाँ पहुँचा है। हमको अकाउंटेबल मत करिए, हमेशा ऑटोनॉमी दीजिए। हम आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके समाज को तैयार करते हैं, वही मेरा काम है। हम कल के समाज को तैयार करते हैं। हमको कितना अकाउंटेबल बनाओगे, हम पर कितने अप्रेजल्स करोगे? दोबारा सोचिएगा कि आप ऑटोनॉमी जरूर दीजिए टीचर्स को, विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन। हम देश का भार उठाते हैं, हमको ऑटोनॉमी दीजिए और हम आपको दिखाएंगे क्या होता है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने ये मौका दिया, हम भी अपनी बात रख सके। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। I extend my gratitude to one all and my profound gratitude to Professor C.V. Sharma for igniting the entire fraternity of dignitaries on the dais and off the dais. I'm inviting you all for lunch and with a request that we all will be over here by 15 minutes past 2, that is 2:15. Thank you so much.